PPL roars as the cricket play. Bats like thunder, hearts on fire. Dreams take flight, rising higher. PPL, hear the crowd scream. Chasing glory, chasing the dream. Every run, every wicket's goal. This is the anthem, bold and bold. From the pitch to the stands, feel the beat. Drums of the earth, stomping feet. Unity in the game we love. PPL shines like stars above. PPL, hear the crowd scream. Chasing glory, chasing the dream. Every run, every wicket's goal. This is the anthem, bold and bold. From the pitch to the stands, feel the beat. Drums of the earth, stomping feet. Unity in the game we love. PPL shines like stars above. Hands in the air, let the spirit flow. PPL fever, let the passion grow. Fast as the cheetah, fierce as the fight. Under the moon, we play all night. PPL, hear the crowd scream. Chasing glory, chasing the dream. Every run, every wicket's goal. This is the anthem, bold and bold. Drums are pounding in the night sky's glow. PPL roars as the cricket play. Bats like thunder, hearts on fire. Dreams take flight, rising higher. PPL, hear the crowd scream. Chasing glory, chasing the dream. Every run, every wicket's goal. This is the anthem, bold and bold. From the pitch to the stands, feel the beat. Drums of the earth, stomping feet. Unity in the game we love. PPL shines like stars above. PPL, hear the crowd scream. Chasing glory, chasing the dream. Every run, every wicket's goal. This is the anthem, bold and bold.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान मोहम्मद आपको खुशामदीद कहेगा NJS स्पोर्ट्स क्लब मुल्तान क्रिकेट अकेडमी के फजल से, जहाँ पर DPL सीजन 2 का आज प्राइम टाइम मैच है। मैच नंबर 6 खेला जा रहा है, जो कि हिमालय पैकेजेस और NJS कुजीन की टीम के दरमियान। आज NJS कुजीन के कप्तान साकिब खान ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने को तरजीह दी और फिर दो अपनी बल्लेबाज इस वक्त विकेट पर मौजूद हैं। टीम के कप्तान साकिब खान सामना करने के लिए तैयार हैं और उनके साथ देने के लिए नॉन स्ट्राइक एंड पे मौजूद है नमान बारी। और पहले ओवर की जिम्मेदारी रहमान महमूद के कांधों पर दी गई है और पहली गेंद जिसे खेल दिया। शॉट फाइनल के लिए जान बड़ी तेजी के साथ दौड़ते हुए यहाँ पर सिंगल के साथ है। न सिर्फ स्ट्राइक को रोटेट के साथ साथ अपना खाता भी खोला साकिब इखलास ने। चलो चलो शाबाश। ये नुमान बारी अब सामने करने के लिए तैयार हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज है और रहमान महमूद का दाएं हाथ से ऑब्रे गेंदबाजी करते हैं। फार एंड की जानिब से तैनात किया गया है और इस मरतबा गेंद को बैकवर्ड पॉइंट और गली के दरमियान खेले, जहाँ पर फील्डर की मौजूदगी में किसी रन का कोई इजाफा नहीं हो सका और गेंद खाली गई। NJS कुजीन ने इससे पहले एक मैच खेला जिसमें शिकस्त का सामना हुआ। यकीनन वो बुलंद हौसले के साथ है ये मैच जीतना चाहेंगे। और साथ साथ अगर देखा जाए हिमालय पैकेज जिसकी टीम ने 2 मैचेस खेले हैं, जिसमें एक में फतह और एक में शिकस्त का सामना हुआ। और इस मरतबा फील्डर मौजूद थे पॉइंट के, जिनसे मिस फील्ड हुई। इसके नतीजे में सिंगल आसानी के साथ बनाने का मौका मिला नुमान बारी को। और नुमान बारी अब नॉन स्ट्राइक इन पे चले गए हैं और टीम के कप्तान ने साकिब इखलास से दाहिने हाथ के पस का आमद बारिश एक सीनियर तरीन बल्लेबाजों में से एक हैं और टीम की क़यादत की जिम्मेदारी भी इनके कांधों पर मौजूद है। और ये अच्छी गेंद थी, अपील हुई है लेग बिफोर की। बैकफुट पे जाकर इसे ग्लाइड करना चाहते थे ऑन साइड की जानिब। गेंद और बल्ले के दरमियान कोई मुलाकात नहीं, अलबत्ता गेंद पैड से लगी। एम्पायर ने यहाँ पर ये डाउन द लेग साइड गेंद पिच हुआ और मजीद बाहर की जानिब जाता हुआ गेंद एम्पायर ने एक अच्छा डिसीजन दिया, नॉट आउट करार दिया और इस अपील को नाकार दिया। आज बार शॉट फाइनल के फील्डर ने उम्दा फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए गेंद को रोका है और किसी रन का कोई इजाफा नहीं हो सका। अच्छा शानदार ओवर जारी है रहमान महमूद का। अब तक इस ओवर में महज 2 ही रन ने कंसीड किए हैं। एक बार फिर से गार्ड लेने के बाद तैयार हुए साकिब इखलास से राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए फ्लाइट के साथ गेंद की इसे खेल दिया। इस मरतबा मिड विकेट एरिया की जानिब एक टिपा खाने के बाद गेंद सलाम मलिक से पहुंची और जब तक उन्होंने थ्रो करके वापस किया 1 रन का इजाफा हुआ। साथ साथ पहले ओवर का खेल मुकम्मल हुआ। पहले ओवर के बाद मजमूई स्कोर है 3, 1 विकेट के नुकसान पर NJS कुजीन का। फैज़ चौधरी को अब बॉलिंग के हाथ में थमा दी है टीम के कप्तान ने। सैफ चौधरी ने फैज़ अच्छे मजबूत जिसामत के हैं, अच्छा नाइस हाई एक्शन है उनका और बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा करते हैं और एक बार हैट्रिक का एजाज़ भी हासिल कर चुके हैं।
दिल्ली कम्युनिटी की किसी भी टूर्नामेंट के दरमियान ने इन्होंने हैट्रिक की। फैज़ दाहिने हाथ की गेंदबाज से दौड़ना शुरू किया, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ एरिया की जानिब जहाँ पर फील्डर मौजूद हैं और किसी रंग का कोई इजाफा नहीं। ये गेंद खाली गई, किसी रंग का कोई इजाफा नहीं हुआ है। आगाज़ अच्छा किया फैज़ ने। विकेट के बहब में यकीनी तौर पर यकसर है खासी तब्दीली आई है, मिजाज है खासा चेंज हुआ है और यकसर है हम देख रहे हैं कि मुतवातिर है रात की किसी न किसी पहर ड्रिजलिंग का सिलसिला शुरू होता है, जो कि ज़्यादा भारी तो नहीं रहता लेकिन विकेट को कहीं ना कहीं वो गीला ज़रूर करता है। और यही वजह है कि विकेट में अब तक की नमी मौजूद है और यही बल्लेबाजों के लिए यकीनी तौर पर दुश्वारी बना रही है। और ज़्यादा बड़े टोटल हमने अब तक होते देखे नहीं हैं। अमूमन बैटिंग पैराडाइज समझी जाती है ये विकेट है, लेकिन बारिशों के बाद से यकीनन मुश्किलात से दरपेश रहे हैं। बल्लेबाजों का कड़ा इम्तिहान लिया है इस विकेट ने और आज से दोनों ही टीमों का कड़ा इम्तिहान भी होगा। दो शानदार टीमें आपस में निबर्द आजमा हैं। यकीनन सैफ चौधरी और नुमान बारी पहली बार है आमने सामने किसी टीम में दिखाई दे रहे हैं। अमूमन एक ही टीम का हिस्सा रहे हैं और यही इस टूर्नामेंट की खूबसूरती है कि जैसे कि मैंने इब्तिदा में कहा था कि यकीनन जिस तरीके से यहाँ पर टीमें ड्राफ्टिंग की गई हैं तो तमाम खिलाड़ियों को आज़ाद छोड़ा गया और कोई भी खिलाड़ी कहीं भी जा चुका है। और जो टीमों के कप्तान थे वो भी दूसरी टीमों में चले गए। मतलब अपील की है लेग बिफोर की, लेकिन एम्पायर ने इस अपील को नकार दिया, नॉट आउट करार दिया, किसी का कोई इजाफा नहीं। मजमूई स्कोर है 4। खेल जारी है दूसरे ओवर का। राइट आर्म ओवर द विकेट। विकेटों के दरमियान आती गेंद जिसे खेलने ज़रूर गए थे लेकिन बहुत शानदार अंदाज अपनाने में कामयाब यहाँ पर नहीं हुए, जिसके लिए हम जानते हैं नुमान बारी को। और ये गेंद भी खाली चली गई। एक नहायत ही उम्दा और बड़ा शानदार ओवर जारी है जिसमें अब तक महज 1 रन कंसीड किया है और अब तक बड़ी हिटों से रोके रखा है। मसनूई रोशनियों के उजाले में ये मैच नंबर 6 जारी है। सिलसिला DPL सीज़न 2। एक बार फिर गेंद ऑन साइड की जाने फ्लिक करना चाहते थे, गेंद पैड से गालिबन ने लगी है और लेग बाय का इशारा देते हुए एम्पायर ने ये वादे किया ये 1 रन लेग बाय की सूरत में है। और अपील में भी कोई ज़्यादा जान नहीं थी और ना ही एम्पायर ने इस अपील पर कान धरे। इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए अपने बॉलिंग के मार्ग पर जाते हुए फैज़ चौधरी। गली बैकफुट पॉइंट और शॉर्ट कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और एक खिलाड़ी शॉट है मिड ऑफ एरिया में मौजूद है। 30 गज के दायरे में एक खिलाड़ी को लॉन्ग ऑन एरिया में तैनात किया गया है, दायरे से बाहर है। और इस मरतबा कवर्स की जानिब खेले जहाँ पर फील्डर मौजूद हैं। उमदा फील्डिंग का मुजाहरा, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। फैज़ान शोएब मौजूद थे और उसी के साथ दूसरे ओवर का खेल भी जाता रहा। 2 के बाद 5 बिना किसी विकेट के नुकसान पर।
रोमान ने अपने कोटे का दूसरा जबकि इनिंग का तीसरा ओवर करने के लिए फार एंड से एक मरतबा फिर तैयार हैं। अराउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए आए। इस बार फील्डर ने किया कैच मिस और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर है 4 रन के लिए। मौजमुद्दीन ने जिन्होंने कैच ड्रॉप किया है, यकीनन इतना ज़्यादा मुश्किल कैच नहीं था लेकिन गालिबन शायद इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और गेंद भी खासी तेज़ आई थी, लेकिन हाइट इतनी ज़रूर थी कि कैच को आसानी के साथ किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर दोहरा नुकसान, कैच भी छूटा और साथ साथ 4 रन भी बल्लेबाजों के खाते में जुड़ गए। इस बार भी बड़ी हिट लगाने के इरादे से बल्ला स्विंग ज़रूर किया लेकिन गेंद और बल्ले के दरमियान कोई तालमेल नहीं। गेंद आई सीधी विकेट कीपर के महफूज दस्तानों में, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। रुमान महमूद ने पिछला ओवर भी बड़ा शानदार है और दिलकश अंदाज से मुकम्मल किया था। एक बार फिर बॉलिंग में उमदा बॉलिंग का परफॉर्मेंस देते हुए यकीनन एक कैच है इनकी गेंद पर ड्रॉप ज़रूर हुआ है, एक नई ज़िंदगी ज़रूर मिली नुमान बारी को। इस बार बल्ले का बाहरी छोर लेती हुई गेंद थर्ड मैन की जानिब है, रमा दवा और फील्डर गेंद के ताकुब में दीवाना बार दौड़े चले गए मौजमुद्दीन, लेकिन गेंद तक रसाई हासिल न कर सके और गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर। तो 4 रन का मजीद इजाफा हुआ चौके की सूरत में। थोड़े से बदकिस्मत रहे हैं सबर में, एक बार कैच भी ड्रॉप हुआ और इस मरतबा भी यकीन तब विकेट कीपर भी चुके हैं और फिर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। रुमान महमूद थोड़े से यकीनन बदकिस्मत रहे। रुमान एक बार फिर तैयार हैं। इस मरतबा ऑफ साइड के बाहर खासी पीछे पड़ी हुई गेंद थी, आखिरी लम्हात में ना जाने क्या सोच कर गेंद को जाने दिया या वरना यकीनी तौर पर जिस तरह की ये गेंद थी इस पर कवर पॉइंट की जाने ज़रूर बड़ी हिट या फिर ज़ोरदार हिट लगाई जा सकती थी, लेकिन इसे यकसर छोड़कर विकेट कीपर के लिए जाने दिया। नुमान बारी ने एक कदम आगे निकाल कर हल्के से खेल करने, ये मैं समझता हूँ कि नुमान बारी जिस अंदाज के बल्लेबाज हैं ये वो अंदाज़ नहीं, कहीं ना कहीं वो जो उनका टच है वो मिस से दिखाई देता है इस टूर्नामेंट में। और ख़ास आज अगर देखें तो यकीनन वो नुमान बारी कहीं भी दिखाई नहीं दी जिनको हमने कई बार बड़ी तवील और शानदार बारियां करते हुए देखा है। क्या बात है यार। इस मरतबा भी दिफाई अंदाज से हल्के से गेंद को ग्लाइड किया और फील्डर नज़ीब में मौजूद थे, किसी तरह का कोई इजाफा नहीं। और यहाँ पर ओवर मुकम्मल हुआ तो 3 ओवर मुकम्मल हुए। 3 ओवर के बाद 13 मजमूई स्कोर है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। Shines like stars above. बोल्ड कर दिया इस मरतबा, फैज खुशी से ने और गले से लगा लिया यहाँ पर साकिब इखलास को, जो कि बड़ी हिट लगाने चले थे इस गेंद पर और गेंद वाले के दरमियान ने कोई आपसी मेल जोल नहीं और गेंद सीधी विकेटों में जा लगी। तो यहाँ पर पहला धचका, पहला नुकसान ने पहली विकेट छटका दी है। फैज चौधरी ने अपनी टीम को फैज पहुँचा दिया। तो 13 के मजमूए पर गिरने वाली ये पहली विकेट जब साकिब इखलास से का हुआ डिपार्चर है, मायूस कदमों के साथ बॉलिंग की जानिब लौटते हुए। तीन रन बनाने के बाद आउट हुए, 8 गेंदों का सामना किया साकिब इखलास ने।
नए आने वाले बैटर हैं यही रिजवान ने अपील हुई है लेग बिफोर की पुरजोर अपील, लेकिन अंपायर ने इस अपील को नाकार दिया, नॉट आउट करार दिया। खासे आगे निकल कर खेल रहे थे और ये खास की डाउन द लेग साइड गेंद पिच भी हुई थी, मजीद बाहर की जानिब निकलती हुई दिखाई दी है। अंपायर ने यहाँ से कोई पॉजिटिव साइन नहीं दिखाया। खेल जारी है। चौथे ओवर का एक मरतबा फिर अपने बॉलिंग की मार से दौड़ना शुरू किया फैज़ चौधरी ने। ओवर द विकेट आए और इस मरतबा कदमों का इस्तेमाल करके इरादा तर्क किया, बड़ी हिट लगाना चाहते थे लेकिन आखिरी लम्हात में अपने शॉट को तब्दील करके फ्लिक करना चाहते थे, लेकिन गेंद आई सीधे विकेट कीपर के हाथों में और वाइड बॉल करार दिया एम्पायर ने। खासी लेग साइड से बाहर जाती हुई गेंद थी। एक एक्स्ट्रा गेंद और मज़ीद करनी होगी फैज़ को इस ओवर में। हिमालय पैकेजेस यकीनी तौर पर पहले मैच में फतह के बाद दूसरे मैच में शिकस्त से 2-4 हो गए थे जब इनका मुकाबला रहा और फिर बिल्डर के साथ। उसके बाद से यकीनन आज ये अपना तीसरा मैच खेलने के लिए आए। यकीनन पूरा अज़म है, दोनों ही टीमें हैं और दोनों ही टीमों में कई अच्छे शानदार नामवर खिलाड़ी मौजूद हैं। इस मरतबा गेंद को हल्के से कलाइयों के बल पर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद को बेहतर अंदाज से डील नहीं कर सके, लेकिन एक रन ज़रूर है स्कोर में जोड़ दिया यही रिजवान ने। एक अच्छी गेंद, उम्दा गेंद जिसका कोई पॉजिटिव जवाब मौजूद नहीं था। इसे सिर्फ रोकने में याफियत जानी है नुमान बारी ने। और ये नुमान बारी, फैज़ चौधरी, सैफ चौधरी यकीनन एक ही टीम का हिस्सा रहे हैं और एक दूसरे के मिजाज को बेहतर अंदाज से जानते हैं। और ख़ासा आसान भी रहता है जब आप मिजाज से आशना हों, खेल को जानते हों, आपने वक्त गुजारा हो। यकीनी तौर पर फिर मुकाबला इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। सिर्फ ये असाब की जंग होती है, असाब पर कौन ज़्यादा हावी हो जाता है यकीनी तौर पर। और ये ओवर मुकम्मल हुआ 4 ओवर के बाद है। मजमूई स्कोर है 15, 1 विकेट के नुकसान पर। आज टॉस जीत कर NJS कुजीन के कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब तक 1 विकेट का नुकसान उठाया है कप्तान साकिब इखलास से 3 रन बनाने के बाद आउट हुए। उसके बाद से ये पार्टनरशिप जारी। Hear the crowd scream, chasing glory, chasing the dream. Every run, every wicket's goal. This is the anthem, bold and bold.
और उमेश शाबाश बेटा, शाबाश जान नहीं लगाना रोमान, फैज रेडी रहना। चल 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 और इस मरतबा मिसफील्ड और एक रन बासानी प्रेशर रखना है, ठीक है, आउट का मसला नहीं है, प्रेशर रखेंगे। बनाने का मौका मिला या रिजवान को। दो बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त विकेट पे मौजूद हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता बॉलिंग साइड के लिए। खतरे जाराना बल्लेबाजी करते हैं नुमान बारी, लेकिन आज ज़रूरत इस बात की कि इनिंग को तवील किया जाए। संभल के इस मरतबा हल्के से मिजाज से मुख्तलिफ है बल्लेबाजी करने के लिए चले हैं। और जब आप अपने मिजाज से हटते हैं और फितरत से हट कर जब बल्लेबाजी करने की आप जुर्रत करते हैं, कहीं ना कहीं आप मुश्किल में होते हैं, क्योंकि जब आप अपने मिजाज से हटेंगे तो यकीन थोड़ी सी दुश्वारियाँ होंगी। और लगता है कि आज थोड़े से परेशानी के आलम में है नुमान बारी। हमेशा जब भी हमने देखा है वो 5वें या 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं जब उनकी टीम मुश्किल में होती है, और बड़ी तगड़ी जा रहा ना बारी खेलते हुए उन्हें देखते रहे। लेकिन आज इब्तदा में ओपनिंग करने के लिए आए हैं खिलाफ तवक्को। इस बार गेंद करने चले थे लेकिन कुछ अपने स्टेप से भटक गए थे रुमान महमूद हैं। रुमान ने अपने खूटे का ये तीसरा ओवर करते हुए हल्के से कट करके बड़ी तेजी के साथ सिंगल लिया शॉट है। गली एरिया में फील्डर मौजूद थे, डायरेक्ट थ्रो के जरिए रन आउट करना चाहते थे लेकिन कोई कामयाबी हासिल न कर सके और एक रन यहाँ पर मजीद है बना लिया है। विकेट के मिजाज को समझ कर थोड़ा सा रुक कर बल्लेबाजी करना चाहते हैं नुमान नबारी, और यहाँ साथ ज़रूर लगेगा और देना पड़ेगा आज या रिजवान को। ये भी अच्छी ईंटें लगाना जानते हैं लेकिन अभी वो वक्त नहीं है। लेकिन यहाँ पर बड़ी तेज़ी के साथ बिल्कुल नज़दीक में खेल कर बड़ी दानिशमंदाना यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट ये देखते हुए फील्डर थोड़े से पीछे हैं। जब तक दौड़ कर गेंद तक पहुँचेंगे एक रन बनाया जा सकता है, और ऐसा ही किया और लब्बैक किया यहाँ पर साथी बल्लेबाज है या रिजवान ने, और अच्छी है रनिंग बिटवीन द विकेट। और एक रन के नतीजे में बढ़ता हुआ स्कोर हो गया है 19 से। सबर की मजीद 2 गेंदें आना बाकी हैं। एक मरतबा फिर रोमान अपनी बॉलिंग के मार पर मौजूद हैं और सामना करेंगे या रिजवान बिटवीन द विकेट गेंदबाजी करते हुए हल्के से बिल्कुल धीमे खेले ढीले बैट के साथ, और नज़दीक में फील्डर मौजूद हैं। मौज़मुद्दीन ने बॉल को फील्ड किया, किसी ने का कोई इजाफा नहीं हुआ। और इस मरतबा दानिश तौर पर कट करने चले थे और ये ख़तरनाक भी हो सकता था, और थोड़ा सा पहले गेंद ज़मीन बॉस हुई। सैफ चौधरी से के साथ साथ 5 ओवर के खेल मुकम्मल हुआ। 5 ओवर के बाद मजमूई स्कोर है 19 से 1 विकेट के नुकसान पर। Stomping feet, unity in the game we love. PPL shines like stars above. Hands in the air, let the spirit flow. PPL fever, let the passion grow. Fast as the cheetah, fierce as the fight. Under the moon, we play all night. PPL, hear the crowd scream. Chasing glory, chasing the dream. Every run, every wicket's gone. This is the anthem, bold and bold. एक बोर्ड फाइन लेके नुमान भाई, फाइन लेके और वो सही है। एक्स्ट्रा कवर खाली छोड़ दो।
So 19 for 1 after 5 overs for NJS Cuisine. Remember, they won the toss, decided to bat first, and we saw for the very first time Numan Bari opening the innings, but up till now he has just scored 11 of 16. Faiz Chaudhary now into his third over. So far, he has not been able to live up to his reputation, Numan Bari. The clear idea of sending him up the order was to make sure that he can use the first 6 overs and get a few boundaries coming in. The electrifying start we have seen teams missing in this tournament, because we haven't really seen sides utilizing their first 6 overs. So that was the reason why Numan Bari must have been sent up the order. So far, he has scored 12, and his partner Yahya came out to bat after they lost their skipper Saqib Ikhlas. Ibadur Rahman once again keeping wickets for Himalaya packages. Saif Chaudhary is in the outfield, standing there at mid-on. Big shot attempted, but will just be a single towards wider mid-on region now. It's a different pitch, different game. Remember, 6th match. And so far, we have seen every side that have gone on to win the toss, they have opted to bat first, because defending a total has been much more easy as compared to chasing. Sides have not been able to go and chase down 132 even. So it was not rocket science to understand that any side who will win the toss will obviously choose to bat first. Fuller in length. This time it's going to be the fielder at mid-off that is going to come into play. Numan Bari is trying his best so that he can regain his form with the bat. His bat has been a little quiet of late. We haven't seen the deadly, the dangerous Numan Bari that we used to when he used to come to bat at number 5 or number 6 and used to hit those really big shots. But that is something that has gone missing of late. Hopefully, by occupying some time at the crease, by facing few more deliveries, he will eventually look to go big. Now, they have played so much cricket together, if we talk about the opposition skipper and Numan Bari, so both of them will be aware of their strengths and weaknesses. They gave the new ball to Rahman Mahmood so that he could turn the ball away from Numan Bari. He had already taken the new ball in the first couple of matches too, but Rahman Mahmood would have been a perfect option for someone like Numan Bari. And today, playing his first game, Faiz Chaudhary, well, he hasn't disappointed either. He has picked up only wicket to fall and hasn't given away many runs. His economy is outstanding as well. Defending that one on the front foot. Good anticipation there from the youngster Humaid Waqas. He got down to the ball, underarm throw, but the ball wasn't that close to the stumps, and as a result, Yahya will get another single. 4 runs coming in that over from Faiz Chaudhary. 6 overs completed. The batting power play is done and dusted. NJS Cuisine, after a slow and sluggish start, are 23 for 1. Drums are pounding in the night sky's glow. GPL roars as the cricket plays.
From the pitch to the stands, feel the beat. Drums of the earth stomping feet. Unity in the game we love. BPL shines like stars above. Hands in the air, let the spirit flow. BPL fever, let the passion grow. Fast as the cheetah, fierce as the fight. Under the moon, we play all night. BPL, hear the crowd scream. Chasing glory, chasing. So still no changes in the bowling department. Rahman Mahmood will bowl out his spell. Yahya Rizwan still dealing in singles. Now this is the style he usually adopts in his batting, Yahya Rizwan. We haven't really seen him taking on the bowlers. That's how he constructs his innings. And a long innings is due on him as well, because we haven't seen him scoring big runs in recent times. Batters have generally struggled so far in this tournament because we haven't seen that many good knocks. Just a couple of half centuries, one for Umar Chawla of D-Riders team and one from Shayan Arfeen of Arfeen Builders. And yesterday we saw Anas Mustafiz scoring 42. Apart from that, there haven't been that many big scores. Hits it really hard, does Numan. It absolutely flew away, but luckily there was a fielder at a deep sweeper cover. That's what we meant when you spend enough time at the crease. You finally start to get a little settled and the nerves usually calm down and you start seeing the ball well. This is possibly the best time for Numan Bari, in fact, that he can try some big shots. Now, there are plenty of open spaces available because the field has been widespread. The batting power play is done, so the shots that he attempted in the first 6 overs, which went straight to the fielders, he might get more runs of them now. Today he came on to bat to open the innings, so we might see some more shuffling in their batting order. We talk about NJS Cuisine. Remember, it's the only side in this Daily Premier League Season 2 that consists of more all-rounders. Just looking to dab it. A bit of a fumble there from Abdullah Jamal at short third, but Numan will just get a run. Clever bowler Rahman Mahmood. And even Rahman has played a lot of cricket along with Numan Bari. .27 for 1 up till now. We have seen anything over 130 has been difficult to chase. Much fuller in length, but this time Tala Malik was there at short extra cover. Saif Chaudhary himself now standing at short third man, very close to the bat so that he can stop those singles, because both these two batters are just looking to guide that ball behind the wicket keeper. Might be given as a wide because that was too wide outside the off stump. It was pretty short as well.
None for 20 for Rahman Mahmood tonight, up till now. Pickish outside in. This time the ball has gone to the left of Saif Chaudhary. He's running in. Will fetch it back, but Raya Rizwan will pick up another couple. 7 overs done and dusted. NJS Cuisine are 30 for 1. First change in the bowling attack. Faiz Chaudhary being replaced now by Umar Loya, another off spinner. Plenty of bowling options available for Himalaya packages too. They've got Huzaifar Rizwan as well. Umaid Waqas, the left arm orthodox, will be bowling at some stage of the innings, and obviously we'll see Abdullah Jamal bowling towards the depth with his wide yorkers. So a lot of arsenal they've got. NJS Cuisine. Let's see whether they can up the ante or not. So far it has been just singles by these two gentlemen, two left-handers. But at least these two batters have gone on to construct a bit of a partnership, because remember they lost their captain very early in this innings. Lighting it up, nicely cleared by the left-hander all-rounder Numan Bari. Just get the feeling Numan, as soon as the 10 overs are going to come to an end, he will look to go hard at the bowler, especially against the left-handed spinner Umaid Waqas if he gets introduced against someone like Numan Bari. So again, just dabbing it. There was slight hesitation initially because Numan Bari wanted that single, but Yahya Rizwan maybe didn't. Then he just relied on the call of his partner and managed to complete that single in the end. Slightly down the leg side will be another extra added to the total. Faiz Chaudhary, I think, bowled really well tonight with the new ball, and he could have been given one more over. Because we have seen the nature of the track, we have seen sides not going for the fast bowlers a lot. This time, Numan Bari decides to go big, and tell you what, that came right out of the screws. Probably the first big shot that he attempted, Numan Bari. Never easy when you are looking to hit the ball against a turn, against the off spinner, especially when he's coming around the wicket. But finally, he decided to open his shoulders, and when he hits them big, they usually stay hit. Is this the sign of something big to come from the big man? We have been waiting for like ages for Numan Bari to come and start hitting big. Is this first of the many to come tonight? One thing is for sure, he will start feeling good about that shot.
And I'm pretty sure that he's going to look to go for the big shots again. It's turning out to be a pretty quiet over up till now. And remember that wide delivery. Had that been a legal delivery, it would have been a pretty decent over from Umar Loya, but not now, because he has now conceded 6, and you never know. Oman Bari might look to go for another one. Slightly quicker through the air, just driving it towards extra cover. It's going to be a dot ball to end the over, but finally we saw a big hit coming in. 8 overs done. NJS Cuisine are 41 for 1. Dream. Every run, every wish is gold. This is the anthem. Bold and bold. Another change in the bowling attack. Now Rahman Mahmood, who was done with his spell from this end, has now been replaced by another young spinner, Mozam Chaudhry, who has been the highlight of this tournament so far. Has been a genuine wicket taker for Himalaya packages. Got a couple of wickets in the first match, got 4 in the next one. And not only he uses his variation, but he has got some really good brains because he uses the angle brilliantly. Mozam Chaudhry. Not a usual off spinner with a simple run-up. He's got a bit of a diagonal run-up. Starts off from the stumps and then goes wider of the crease. So he creates a bit of a different sort of angle for the left-hander especially. Because when he's looking to come closer to the stumps, the batter is expecting the ball to be straighter, but then all of a sudden he comes wider of the crease, and then the ball is angling into the pads, and if he gets a bit of turn of the track, then it becomes equally difficult for the batters to hit him away for runs. And that's why I think he has been generally more successful in this tournament. Flicked away by Numan Bari. He'll just get a single right now. There is something, definitely something going on in his mind, Numan Bari. It's very hard to decipher what that actually is. Because up till now we just saw him dealing in singles, and all of a sudden we saw a big shot coming in, and that went over the boundary ropes, and after that we haven't seen him attempt to another one. Goes for the reverse sweep, connects that one well, does Yahya Rizwan. That's going to run away for 4. No matter how slow the outfield is, but if you get that much amount of bat and that much amount of timing, the ball usually travels. Had so much time to just wait for that one. He got into that position very early there, so that allowed him to just wait for the ball to come closer to the bat, and then he just made sure that he hit it wider of the wicketkeeper gloves, Ibadur Rahman. Last couple of overs have proven to be a little productive now for NJS Cuisine. We saw a 6 coming in the previous over, and now a boundary in this one. But even then, if a wicket goes down, you're back to square one. Sweetly timed. A little wide of the fielder at long over. Will just fetch him a run, but the sound of the bat suggests that he's middling the ball now. Yeah, here is one, and that's a good sign.
Two left-handers are out at the crease, so he'll not look to change his angle, Muazzam. Numan Bari might look to change his mood. Much closer to the bat, otherwise that might have got a bit of more elevation that he was expecting. A single down towards long on, another decent over. A productive over comes to an end for NJS Cuisine, because after 9 they are now at 49 for 1. Drums are pounding in the night skies glow. Himalaya now into his second. Once again, it's Numan Bari on strike. Pulls it slower, but that has been deposited, and this time it's even bigger than the previous one. They took a lot of time to retrieve that ball back, or that went into the tents, but this time the ball has gone outside the stadium. The invitation was there for Numan Bari to go big, and look at how straight, how hard, and how long he managed to hit that one. 6 to start the over. 50 also comes up for NJS Cuisine. The whole dugout of NJS Cuisine must be breathing a sigh of relief after watching Numan Bari coming back in form. Much quicker through the end. I'm pretty sure he's not going to lob them more up. Umar Loya, he knows that whenever he's tried to give the ball a bit of air, Numan Bari has gone big against him. Slightly short, hits it powerfully on the offside. That's going to travel past extra cover. Brutal strength on display there from Numan Bari there. It was short, it was wide, there was not much space behind that delivery, and the ball was further turning away from him, so he got the room he was looking for and absolutely thrashed that one past extra cover. All of a sudden his strike rate, which was well below 100, is now touching 120s. A bit of extra bounce for Umar Loya. Well, one thing is for sure, we haven't seen Numan Bari really sweeping the ball or playing towards the leg side, so might not be a bad idea if Umar Loya can target his pads. Hit away on the offside, a bit of work to do for the fielder, a deep extra cover. He'll have to move towards his right, which he does, but not before Numan Bari picks up another couple. He's getting all the applause from the dugout. This is what Numan Bari can do. This is what we have seen him doing in the past. Playing it with soft hands. Won't get that single he was after. Still won't get it because of that overthrow. 12 coming in that over from Umar Loya. Expensive start for the off spinner. 10 overs done. NJS Cuisine are 61 for 1. तो पहले 10 ओवर के खेल में 61 तक मजमुआ पहुंचा है और एक अच्छी पार्टनरशिप इन दोनों बैट्समैनों के दरमियान बनती हुई दिखाई दे रही है इस मरतबा।
कट करना मकसूद था, लेकिन गेंद और बल्ले के दरमियान फिर से कोई मुलाकात नहीं। बड़े ख़तरनाक अंदाज से खेले, ऑन द विकेट कीपिंग का मुजाहरा क्या है इबाद ने। एक कदम आगे आ गए थे, लेकिन आखिरी लम्हात में अपने इरादे को तब्दील किया। बजाय बड़ी हिट लगाने के गेंद को रोकने में आसानी जानी और गेंद को रोक लिया है मौज़म एक बार फिर अपने बॉलिंग की मार से। इस मरतबा हल्के से चहलकदमी के अंदाज से ड्राइव करते हुए सिंगल मुकम्मल किया और अब नॉन स्ट्राइक एंड पे पहुँचे या रिजवान। तो हमें कुछ बुझे बुझे से दिखाई दे रहे थे नुमान बारी, लेकिन वक्त के चलते यकीनन अपने उस पुराने फ्लो में अब दिखाई दे रहे हैं। वो जो आज जहाराना खेल है जिसके साथ यकीनी तौर पर इनकी वाबस्तगी है, अब वो ज़ाहिरी तौर पर इनकी बैटिंग में नुमाया तौर पर दिखाई दे रहा है। ये वाइड डिलीवरी है और एक रन एक्स्ट्रा का बल्लेबाजों के खाते में और जुड़ता हुआ। मौसम अपने खूटे का दूसरा ओवर करते हुए अब तक 10 रन दे चुके हैं। नहायत ही उमदगी के साथ जोरदार हिट लगाई कवर्स एरिया में, बड़ी उमदा फील्डिंग का मुजाहरा किया। डीप में मौजूद है फैज़ चौधरी ने, जितनी अच्छी हिट उतनी ही शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया। फैज़ ने एक बार एक ही रन तक महदूद किया। संभल कर बैकफुट पे जाके खेले, खासा इंतज़ार किया इस गेंद का, लेकिन अपनी मंशा के मुताबिक गेंद को ना ही निकालने में कामयाब हुए, ना ही ज़्यादा ज़ोर से हिट लगाई। या रिजवान ने यकीन तौर पर आज सपोर्टिंग रोल है अदा करते हुए दिखाई दी हैं। तमाम तर जिम्मेदारियाँ नुमान बारी ने अपने कंधों पर उठा रखी हैं। इस मरतबा गेंद को फाइनल एरिया की जाने पे लगता है कि शायद धकेलने में कामयाब हो गए हैं। गेंद जा रही है डी फाइनल एरिया की जाने, जहाँ फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। सैफ चौधरी ने इस दौरान 2 रन का और मज़ीद इजाफा हुआ। इसी के साथ साथ ही खेल का 11वां ओवर भी मुकम्मल हुआ। 11 के बाद 66 मजमूई स्कोर, तो यकीनी तौर पर 6 की औसत से रन बनाए गए हैं पहले 11 ओवर की खेल में। और अब मैं समझता हूँ कि आने वाले ओवर्स में रन बनाने की जो रफ्तार है उसमें इजाफा करना होगा। That's like thunder, hearts on fire. Dreams take flight, rising higher. TPPL, hear the crowd scream. Chasing glory, chasing the dream. Every run, every wicket's goal. This is the anthem, bold and bold. From the pitch to the stands, feel the beat. Drums of the earth, stomping feet. Unity in the game we love. PPL shines like stars above. TPPL, hear the crowd scream. Chasing glory, chasing the dream. Every run, every wicket's goal. This is the anthem, bold and bold. From the pitch to the stands, feel the beat. Drums of the earth, stomping feet. Unity in the game we love. PPL shines like stars above. Hands in the air, let the spirit flow. PPL fever, let the passion grow. Fast as the cheetah, fierce as the fight. Under the moon, we play all night. PPL, hear the crowd scream. Chasing glory, chasing the dream. Every run, every win. एक छोटे से वाटर ब्रेक के बाद खेल का फिर से आगाज़ है।
बॉलिंग में खासी वैरायटी मौजूद है। अब बॉलिंग में मुतारिफ करवाया जा रहा है बाएं हाथ की गेंदबाज है फैज़ान शुएब को। अपने खोटे का पहला ओवर करने के लिए आए हैं। अभी एक और बाएं हाथ के नौजवान अच्छे उभरते हुए बॉलर हमैद वकास भी बॉलिंग के लिए आना बाकी हैं। तो बॉलिंग में खासी वैरायटी मौजूद है। हार उठाकर खेल दिया इस मरतबा बिल्कुल सीधा और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। इस बार है गेंद बिल्कुल सीधा खेले, बहुत शानदार है, बड़ी हिट लगाई इस मरतबा भी। ये तीसरा छक्का नमान बारी के बैट से, इस मरतबा भी अच्छा कदमों का इस्तेमाल और मिडल ऑफ द बैट खेले, क्या ही शानदार ये हिट लगाई है। और फिर से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए, यकीनन तीसरा छक्का लगा चुके हैं। और इस मरतबा फील्डर के हाथों से निकली गेंद और जा रही है बाउंड्री लाइन की जाने। फील्डर दवानावार गेंद के ताक़ुब में दौड़े ज़रूर थे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं अंदाज़ा इस बात का ज़रूर था कि गेंद नहीं रुकने वाली और गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। हमैद वकास जो कि पॉइंट एरिया में मौजूद थे, बिल्कुल गेंद गोली की मानिंद और उनके नज़दीक से निकल गई और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई है, तो रन मिले हैं 4। स्क्वायर ऑफ द विकेट खेले, क्या ही खूबसूरत है, 90 के जाविये में खेलने में कामयाब हुए। गेंद को नुमान बारी एक बार फिर गेंद को खेल दिया है डीप को कॉर्नर ये की जानी। फील्डर गेंद की ताक़ुब में दौड़कर बिल्कुल बाउंड्री लाइन के नज़दीक गेंद को रोकने में कामयाब हुए। यकीनन एक अच्छी शानदार फील्डिंग के नतीजे में यकीनी बाउंड्री सेव की। नुमान बारी मज़ीद 2 रन बनाने में कामयाब हुए। इसी के साथ साथ नुमान बारी ने अपने शानदार 50 रन मुकम्मल किए। बड़ी कमाल आज बारी खेली है, एक शानदार नॉक। इब्तिदा में यकीनी तौर पर बड़े बुझे से दिखाई दे रहे थे, संभल कर बल्लेबाजी की, लेकिन अब वक्त के चलते यकीनी तौर पर अपने वो जारहाना खेल के साथ फिर से मौजूद है विकेट पर। क्या ही कमाल, 3 छक्के भी लगा चुके हैं इस इनिंग में। इस बार भी बड़ी भरपूर कुव्वत से लगाई गई हिट, डीप एक्स्ट्रा कवर और वाइडिश लॉन्ग ऑफ के दरमियान गेंद पर झपकते ही बाउंड्री लाइन से बाहर है। फील्डर के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा इस बार भी नुमान बारी ने। और इसी एंड से जब उमर लोया गेंदबाजी करने के लिए आए थे, यही हशर किया था नुमान बारी ने। और ये एंड यकीनी तौर पर खासा रास आया है नुमान बारी को, और बड़ी जारहाना तूफ़ानी बैटिंग का सिलसिला इनकी जारी है। और इसी के चलते यकीनी तौर पर पिछली गेंद पर अपनी निफ्ट सेंचुरी भी मुकम्मल कर ली थी। इस बार नुमान बारी तैयार नहीं थे और बड़ी तेज़ी के साथ गेंद करने के लिए जल्द आ गए थे फैज़ान शुएब। इस मरतबा ठीक एक्स्ट्रा कवर रीजन की जानिब को धकेला है, फील्डर मौजूद, मजीद 1 रन का इजाफा किया। मौसम ने दूर से गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में फेंकी है और उसके साथ साथ ये ओवर भी जाता रहा। तो 12 गए 83, 1 विकेट के नुकसान पर NJS कुजीन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। Kids go out, this is the anthem. Bold and bold. 1
मौसम कंटिन्यू करेंगे इस मरतबा गेंद को लॉन्ग ऑन एरिया की जानिब खेलते हुए 1 रन का इजाफा किया स्कोर में। थला मलिक है बिल्कुल बाउंड्री लाइन के नज़दीक मौजूद हैं, वहाँ से गेंद को थ्रो किया, 1 रन तक महदूद किया। या खासियत संभल कर अब तक विकेट पर मौजूद हैं, 20 रन बनाए हैं उन्होंने भी। और यकीनन आज उन्होंने इस पार्टनरशिप में बड़ा अपना अहम कलीदी किरदार अदा कर दिया है। और ये पार्टनरशिप यकीनन इब्तदाई विकेट का खमियाजा पूरा करने के बाद यकीनन एक अच्छी पार्टनरशिप में तब्दील हो गई है। यहाँ से यकीनन बड़े स्कोर बनाए जा सकते हैं। और इस मरतबा लगभग ये फुल टॉस डिलीवरी थी जिससे पर बीट हो गए। नुमान बारी बड़ी शानदार बैटिंग का मज़ा किया आज। विकेट के चारों तरफ जिस अंदाज से उन्होंने जा रहा ना स्ट्रोक्स खेले हैं यकीन तौर पर है आज फुल फ्लो में है। इस मरतबा गेंद को डीप पॉइंट एरिया में खेले और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। यकीन तौर पर ये वो एरिया है जहाँ पर स्क्वायर ऑफ द विकेट आप छक्का आसानी से नहीं लगाते। बड़े कमाल है आज बैटिंग का मज़ा कि आज लगता है कि नुमान की रात है और यहाँ चाहते हैं जैसे वो चाह रहे हैं अपने हमले करते हुए। यकीन तौर पर बॉलर को पसपा किया है। इस बार इनके निशाने पर थे मौज़म और इस बार भी ऊंचा खेले और गेंद जाएगी दूर और रन मिलेंगे जैसे गुच्छे में अंगूर। 6 रन। वाओ व्हाट अ हिट, क्या ही कमाल है इस बार एलिवेट किया और लेंथ भी खासी देने में कामयाब हुए नुमान बारी। और हर बार पहले से ज़्यादा बेहतर है और परफेक्शन के साथ बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर दिखाई दिए नुमान ने। इस बार भी कोई ज़्यादा मुश्किल दिखाई नहीं दी जिस अंदाज से उन्होंने ये छक्का रसीद किया है। आज कमाल ज़ोरे बाजू दिखाया है नुमान ने। निफ सेंचुरी बनाने के बाद यकीनन और भी ज़्यादा जा रहा ना मूड में। इस बार ऑफ साइड के बाहर जाने दिया ये जानते हुए कि ये वाइट बॉल है और एम्पायर की जानिब से इशारा भी मौसूल हुआ। दानिश अहमद सदीकी ने वाइट बॉल का इशारा दिया। बढ़ता हुआ स्कोर हो गया 98, 1 विकेट के नुकसान पर। और इस मरतबा केस गेंद की थी, खींच दिया था गेंद को और फिर से वाइट बॉल का इशारा एम्पायर की जानिब से एक और एक्स्ट्रा गेंद करनी पड़ेगी। ये यकीनी तौर पर एक्स्ट्रा के रन ज़ाहिर कातिल है बॉलिंग साइड के लिए बन सकते हैं। इनसे यकीनी तौर पर इज्तनाब करना होगा, परहेज़ करना होगा, विकेट टू विकेट बॉल करनी होगी और नुमान के लिए यकीनी तौर पर वेरिएशन भी दिखानी होगी। लेकिन इस मरतबा नुमान किसी को भी खातिर में लाने में तैयार नहीं है। इस मरतबा भी डीप एक्स्ट्रा कवर की जाने पर क्या ही कमाल है, ज़ोरदार हिट लगाई है और गेंद फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर फिर से मिलेंगे 4। ऑफ साइड के बाहर यकीनी तौर पर जब भी गेंद मिलती है पूरी ताकत झोंकते हैं और जब गेंद और बल्ले का मिलाप होता है तो बाप रे बाप होता है। और इस बार अब 13 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ। 13 ओवर के बाद 103 यकीनी तौर पर रन बनाने की जो रफ्तार है वो खासी अब बुलंद मकाम तक पहुंच गई है। यकीनी तौर पर जो रन बनाने की जो शरह है यकसर है ऊंचाई की जानिब गई है और इसका तमाम तर सहरा जाता है नुमान बारी के सर जिन्होंने बड़ी शानदार जाराना बल्लेबाजी करते हुए अब तक जो रन बचाए हैं अपने वो 72 हैं। 72 पे चले गए हैं लेकिन एक बड़ा टोटल बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यकीनन अगर विकेट पर और भी मज़ीद वक्त गुजारते हैं तो सेंचुरी कहीं ना कहीं इनके आसपास मौजूद है। तो इस टूर्नामेंट का यकीन तौर पर सबसे बड़ा टोटल भी बनाने में कामयाब हो गए हैं। इनफरादी तौर पर है 72 बनाकर अभी विकेट भी मौजूद है। इसमें और भी यकीन तौर पर रन आ सकते हैं और भी रन ऐड कर सकते हैं, सेंचुरी बना सकते हैं। अच्छे खासे ओवर अभी बाकी हैं, 7 ओवर का खेल है, मज़ीद खेला जाना है। एक बार फिर तलब कर लिया गया है फैज़ से चौधरी को जो कि इब्तदा में हासिल करता 1 विकेट है इनके खाते में गई थी और इब्तदा में विकेट चटकाने में कामयाब हुई थी लेकिन उसके बाद इन्हें बॉलिंग से रोक लिया गया था। लेकिन एक बार फिर एक ऐसे अहम मौके पर उन्हें लाकर खड़ा किया गया है जब बल्लेबाज मुकम्मल तौर पर मैच में हावी हैं और जैसे चाह रहे हैं वैसे रन हासिल कर रहे हैं। इस मरतबा सामना करेंगे या रिजवान है
बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, एक कदम आगे आए और सीधे बैट के साथ ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ एरिया की जानिब, जहाँ पर मौजूद थे तला मलिक। एक रन का इजाफा किया स्कोर में। इस बार फुल टॉस गेंद और यकीनन ये ज़्यादा अच्छा कनेक्शन नहीं था, लेकिन यहाँ पर गेंद खासी आगे ज़मीन बोस हो गई है फैज़ान शुएब से, जो कि डीप को कॉर्नर में मौजूद हैं, और ना ही ज़्यादा अच्छा कनेक्ट कर सके और ना ही गेंद ज़्यादा ऊंची गई, और यकीनन ये ख़तरे से खाली रही हिट। नुमान बारी एक रन बनाकर अब नॉन स्ट्राइक एंड पर चले गए हैं और स्ट्राइक एंड पर जिम्मेदारी संभाल ली है याहिया रिजवान ने। 22 के इंफरादी स्कोर पर सामना करेंगे फैज़ का। कदमों का इस्तेमाल किया, लेकिन आखिरी में जहानत का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि ये गेंद ऐसे जोन में नहीं थी जहां पर वो बड़ी हिट लगा सकते थे, और समझदारी दिखाई है और एक ही रन तक यहां पर महदूद हुए। और अच्छी बात यह है कि नुमान बारी को उन्होंने स्ट्राइक दिया है, लेकिन नुमान बारी के जो अब खदो खाल हैं, जो उनके अंदाज हैं, वो ये बता रहे हैं कि वो खासे थक चुके हैं, क्योंकि नासिब उन्होंने छक्के चौके लगाए, साथ साथ दौड़े भी अच्छे खासे हैं। एक बड़ी इनिंग इन पर ड्यू थी और जो यकीनी तौर पर आज वो खेलने में कामयाब हो गए हैं, और देखना यह कि आज क्या सेंचुरी बनाने में कामयाब होंगे। फिर से ऊंचे खेले और गेंद जाएगी फिर से बाउंड्री लाइन से बाहर, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, और गेंद पलक झपकते ही बाउंड्री लाइन से फजाओं में बातें करती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर गई, तो 6 रन का और मजीद इजाफा। आज तमाम वार आउट ऑफ द पार्क। नुमान बारी यकीन तौर पर आज फिर से लगाते हुए ज़रबकारी, और यकीन तौर पर ये इनका नेचुरल खेल है, जिससे अब वो खेलते हुए मुकम्मल तौर पर बॉलिंग साइड पर हावी हो चुके हैं। ये ऑफ साइड से बाहर थी, मजीद बाहर की जानिब गई है, जिसे जाने दिया। नुमान बारी ने छेड़छाड़ करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की, और थोड़ा सा मौका भी मिला है यहाँ पर सांस लेने का। नुमान बारी को थोड़ी सी राहत है, चाहते हैं, खासे थकन से चूर हो चुके हैं, सर तोड़ कोशिशें की हैं, बड़ी ईंटें लगाई हैं, और रन बनाने की जो जिम्मेदारी है वो अपने कांधों पर लेकर अब तक चले हैं। आज तमाम ही बॉलर्स का उन्होंने मर्दाना वार है सामना किया, ना सिर्फ सामना किया बल्कि मुंह तोड़ जवाब भी दिया आज अपने बल्ले से। या सामना करेंगे, अच्छी गेंद यॉर्कर डिलीवरी, इसे दबाते हुए खेल गए हैं, यकीनी तौर पर अच्छा डील किया है। मैं समझता हूँ खतरनाक हो सकती थी गेंद अगर बड़ी हिट पे जाते या कहीं गलती के मुर्तकिब होते हैं, लेकिन अच्छी ये डील कर गए गेंद। और अब जबकि 14 ओवर के खेल मुकम्मल हुआ, 14 ओवर के बाद 114। From the pitch to the stands, feel the beat. Drums of the earth stomping feet. Unity in the game we love.
बड़ी हिट पर गए थे इस बार है, लेकिन गेंद खासी ऑफसाइड से बाहर थी। अब्दुल्ला जमाल को अब बॉलिंग में आजमाया जा रहा है फार एंड की जानिब से। दाहिने हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर हैं, 804 नंबर की शर्ट पहने हुए अपने बॉलिंग के मार पर तैयार हैं। नुमान बारी सामना करेंगे। नुमान बारी यकीनन अब अपनी सेंचुरी की जानिब उन्होंने देखना शुरू कर दिया है। लीजिए जनाब, फिर से ऊंचा खेले और दूर भी, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, मानो गेंद को लगाए हो पर, और गेंद फजा में गई फुर 6 रन के लिए। क्या ही कमाल बल्लेबाजी का भरपूर नमूना पेश किया है आज। एक के बाद एक ताबड़तोड़ और बुलंद बाला छक्के। नुमान बारी यकीनी तौर पर आज मुकम्मल तौर पर हावी। अब्दुल्ला जमाल का भी कमाल यहाँ पर नहीं चला। गेंद जब बल्ले से टकराई यकीन तौर पर वहीं अंदाजा हो चला था कि ये गेंद फिर से ऊंचाइयों को छुएगी। और गेंद बल्ले का किनारा छूकर बाउंड्री लाइन से बाहर। यकीन तौर पर किस्मत के धनी, किस्मत के धनी, किस्मत की देवी आज साथ दे रही है। किसी दौर में श्री देवी मेरा साथ देती थी, लेकिन यहाँ पर अब किस्मत की देवी इनका साथ दे रही है। नाइन्टीज़ पर चले गए हैं, 92 पर मौजूद हैं, इनटू द 90s। और इस मतलब डाउन द लेग साइड गेंद खासी बाहर है। अब्दुल्ला जमाल यकीन तौर पर प्रेशर है झेलते हुए। एक रन का और इजाफा और 1 को 2 में कन्वर्ट किया। क्या ही कमाल ये हुनरबाजी। ये बल्लेबाज यकीनी तौर पर कलाकार है और क्या ही शानदार है। बल्लेबाजी के साथ साथ हुनरमंदाना समझदाराना रन बनाने का जो सिलसिला है यकीनी तौर पर अब तवील से तवील होता है। यकीनन अब सेंचुरी के बिल्कुल नज़दीक आ पहुँचे हैं, 94 तक जा पहुँचे हैं। नुमान बारी कैसे टूर्नामेंट की पहली सेंचुरी बनाने में कामयाब हो जाएंगे। नुमान ने एक बड़ी हिट से दूर है, इस बार हल्के से गेंद को ग्लाइड करते हुए सिंगल बना लिया है। और अब नॉन स्ट्राइक एंड पे जा पहुँचे याहिया रिजवान ने। इस खासे पीछे चले गए हैं, हालांकि इब्तदा में ही ज्वाइन किया था याहिया रिजवान ने। 28 गेंदें खेली हैं, मैच से 23 रन बनाकर है। विकेट भी मौजूद है, कम कम खेलने को मौका मिला है, ज़्यादातर स्ट्राइक हाथों में रखा है नुमान बारी ने। पॉइंट पे मौजूद फील्डर उमैद वकास ने गेंद को फील्ड किया। इसी के साथ साथ ओवर भी मुकम्मल, वो 15 ओवर का खेल यहाँ पर जाता रहा। 15 ओवर के बाद 131 मजमूई स्कोर है। 1 विकेट का नुकसान उठाया अब तक के खेल में एनजेएस कुजीन ने।
So 131 for one. Muazzam bowling his last over now. He's bowling his last over as a fast bowler. Thrashed on the offside by Numan Bari. That's going to run away for 4-2. Well, the fact that Numan Bari was hitting sixes and boundaries at will against the off spinner, so he decided to come as a fast bowler, but that's not going to change anything whatsoever. And there wasn't a big gap between deep extra cover and cover fielders. Hardly a gap of 10 meters, and even then Numan Bari was able to thread that one. Now he's batting on 99 of 54. Chance of a run out, and he hits. It's not going to be Numan Bari, but Yahya Rizwan will have to make a sad walk back to the dugout. He sacrificed his wicket for Numan Bari. Muazzam Chaudhary did the right thing by throwing at the non-strikers, and he was looking to get that single to go to that personal milestone. Yahya Rizwan had no time. There was a bit of collision between him and the bowler, and he already given up. So wicket after ages, it seems, for Himalaya packages. A big partnership comes to an end between Yahya Rizwan and Numan Bari, with Yahya now walking back. NJS Cuisine at 135 for 2. Tokyo roars as the cricket blade. Bats like thunder, hearts on fire. Dreams take flight, rising higher. Hear the crowd scream, chasing glory, chasing the dream. Every run, every wicket's goal. This is the anthem. Bold and bold. Walks in at number 4, but he's at the non-strikers end. Numan Bari now batting on 99, so all the focus is on him. Dabs it on the offside, gets a much-needed single, and Numan Bari, what an innings this has been from their premier all-rounder. It's Numan Bari in yellow with the runs. He's back. He's being congratulated by his opponent teammates too. Saif Chaudhary with the pat on his back, recognizing the importance of this innings. 100 of 56 deliveries, 7 towering sixes and 8 boundaries in it. First century of this Daily Premier League Season 2, and it's that man, Numan Bari. Came out to open the innings, was a little quiet for the first half of his innings, but then when he decided to go big, he never looked back. And tell you what, if he stays out there till the end, he's still got much more time remaining to cause even more damage to the hopes of Himalaya packages of restricting the opposition to a low score. Gets it towards fine leg, a bit of a misfield from Humaid Waqas. You don't expect him to do a bit of a fumble. That's going to allow Anas to come back for the second run. But that's what pressure does. Even the best of the fielders do fumble in the end. We saw the captain Saif Chaudhary missing few deliveries, and now it was Humaid Waqas, and you can't even blame him. What a fine knock this has been from Numan. And he's not done yet. He's still asking for a fresh pair of gloves because he wants to do some more damage here tonight. Slightly short. This time he has managed to hit that in the gap between square leg and fine leg. Will be an easy couple once again for Anas Iqbal. 2 more will be added to the total. Not turning out to be a decent night this for Muazzam Chaudhary. Probably his first outing in this tournament where he has gone wicketless up till now. He's still got 1 more ball to go in his spell.
They haven't used Humaid Waqas tonight. Good Yorker. Just going to be a dot ball, so he'll be on strike at the start of next over. Numan Bari, as 16 overs are done and dusted. And NJS Cuisine, after the loss of 2 wickets, are 140. Abdullah Jamal into his second over, gave away 17 runs in his first over. Numan Bari comes down the track, completely lost control of his bat. That might run away for 4 because the fielder at square leg might not be able to pull the ball back. In fact, he just pushes that one with his left leg. And Numan Bari just gets a single. Well, he'll have to jog an extra mile to retrieve his bat back because that went towards mid-wicket. If he hadn't lost control of his bat, he would have loved to come back for the second run. Now, how much more damage can they do? One thing is for sure, NJS Cuisine are in a very strong position to post a huge total on the board, somewhere between 170 and 180, which will be the first time in this tournament that a side will go past 170. And if that happens, it's not going to be easy for Himalaya packages, and they will be relying on someone like their captain, Saif Chaudhary, to play a similar knock as what Numan Bari has done tonight. Brilliant Yorker. Excellent stuff from Abdullah Jamal. Now, he's a very good bowler at the depth, but when you've got someone like Numan Bari on song at the other end, I mean, the options are very limited. Still got plenty of batting options left for NJS Cuisine. Used his feet, the ball just swirled away towards the leg side. Will be another wide given by the on-field umpire, so that will be one more added to the total. Now we saw Muazzam Chaudhary bowling as a fast bowler in the previous over. Abdullah Jamal is bowling this one. What are the other bowling options for Himalaya packages? Hits it hard. Doesn't time it well enough. Chance for the fielder at long on. Tala Malik in his second attempt will finally complete that catch. Excellently held by this fielder out there at long gone. Abdullah Jamal gets the prize scalp of Anas Iqbal. He was looking to up the ante. He was looking to keep that momentum going of scoring those boundaries and maximums. It was well outside the off stump. He had to drag it, getting at the bottom of the bat, and Tala Malik making no mistake. Another wicket falls for NJS Cuisine. They'll have lost their third. Anas Iqbal walking back. It's 142 for 3. Saad comes in at number 5.
Another wide down the leg side from Abdullah. The idea is pretty clear. He's looking to target the stumps and the pads of the new batters. Very good comeback this from Abdullah Jamal, especially in his second over. Pulls that one full, plays that one towards extra cover. Numan Chawla now standing at deep extra cover, so even Saad will just get a run to get up the mark. Now Numan Bari back on strike, and ideally NJS will be hoping that he can stay on the strike for as many deliveries as possible in these last few overs. Not an easy job for the new batter coming in and straight away start going for those big shots. Bowls it slower. It's up in the air. Chance for the square leg fielder, and he takes it. Good swirling catch taken by that fielder at square leg. I think it was Rahman Mahmood who was initially very nervous, but finally hold on to one. Slower delivery does the trick for Abdullah Jamal. He gets his second wicket of the over, and probably the biggest of the night, considering it's Numan Bari who walks back. But what an knock we have witnessed here for the big left-hander. Regaining his form, and that too with a big knock. 101 is what he managed tonight. NJS Cuisine have now lost their fourth wicket. 144 for 4. Two wickets in the over for Abdullah Jamal. Abdul Moiz Sultan walks in at number 6. Flurry of wickets now for NJS Cuisine. And what we were expecting that they might go past 170 might not be the case with Numan Bari being dismissed now. Comes down the wicket straight away and gets another single towards the offside. Three more overs to go. And we are speculating who is going to be the other bowler apart from Abdullah Jamal to board towards the death. And now it's going to be Faizan Shoaib. He also got hit for 17 runs in his opening over, but that happened when Numan Bari was at the crease. Now he has been dismissed, and now he can shuffle his bowlers, Saif Chaudhry. Abdullah Jamal will bowl one more over. Probably that will be the 19th over of the innings, and he might see Faizan Shoaib continuing to bowl the last over of the innings, but this over is going to decide that. Big shot attempted. That has gone absolutely nowhere. Faizan himself trying to get in the needed. He's not going to get anywhere near to that ball. He was in completely opposite direction of where the ball was coming. Tried to get as closer to the catch as possible, but did not even get his hand to it. Sending in someone like Abdul Moiz Sultan when you've already got some pinch hitters might not have been a good decision for NJS Cuisine, but you never know. One or two big blows and he might prove all of us wrong. Hits it slightly in the air, hits it in the gap. Excellent effort. Brilliant effort in the end by Tala Malik. He has already taken a really good catch, and now he has saved 3 precious runs for his team. That was a chance that gone begging. Here you see Faizan Shoaib just hoping instead of going for the catch. Saad decides to go big, connects, and that goes just a little wide of the fielder, a deep mid wicket. That's going to go all the way for 6. Faizan once again just dropping it shorter, and all of a sudden this pitch looks like a batting paradise. That was hit powerfully hard towards the leg side. 150 also comes up for NJS Cuisine. Remember, they still got a couple of more overs to go after this one.
He goes once again, similar direction, chance with the fielder at mid-wicket, and he puts it down. And not only did he drop the catch, but the ball also went over his head for another 6. Similar delivery, although it was touch closer to the off stump, but once again a big shot attempted by Saad, and the ball just brushing through his hands to go all the way for 6. Couple of sixes to end the over. Another expensive over from Faizan comes to an end. 15 coming in that, 18 done. NJS Cuisine are rocking. They are 160 for 4. From the pitch to the stands, feel the beat. Drums of the earth, stomping feet. Unity in the game we love. PPL shines like stars above. TPPL, hear the crowd scream. Chasing glory, chasing the dream. Every run, every wicket. They've decided to save one more over of Abdullah Jamal for the last over of the innings, as Humaid Waqas now comes into bowl, the 19th. Could have bowled much earlier, but they decided not to introduce him, especially when the two left-handers were at the crease. Yahya Rizwan and Numan Bari. Once again, good delivery. That's what youngsters do. They've got brains, they've got skills. And you never know, even if Humaid Waqas could have been given the ball earlier, he might have got to that wicket they were looking for. Comes down the pitch, will be stunned. Abdul Moiz will be walking back, and Humaid Waqas, what a brilliant over this is turning out to be. 3 dot balls, a wicket. And him, along with his captain, must be hoping, why didn't he come on to bowl earlier? He's going to walk back now, Abdul Moiz, for a low score. NJS Cuisine have now lost their 5th. They are 160 for 5. Sheikh Ubaidur Rahman at number 7. Tries to hit it hard. Another wicket. 2 in 2 for Humaid Waqas. Well, we already know how good a fielder he is, and he has taken a spectacular catch of his own bowling. It was full, it was wide. Ubaidur Rahman, well, he didn't have many options left. He was trying to hit it as hard as possible, just couldn't keep it down, and a really good catch taken towards his left on his follow-through. Humaid Waqas, well, could have been introduced earlier, but that wasn't the case. And without giving a single run up till now, he has now picked up a couple of wickets. It's 160 for 6 NJS Cuisine. दो बाकी है, हैट्रिक बॉल है बिलाल. शाबाश. Bilal Ahmed now coming into bat at number 8. Humaid Waqas on a hat-trick. Still no fielders closer to the bat. Goes for the big shot. Chance of the fielder at long off. Taken by Faizan Shoaib. And it's a hat-trick for Humaid Waqas. It's another first ball duck for Bilal tonight. And what a performance this from Humaid Waqas. 3 wickets, no run conceded. Bilal looking to go for the big shot, looking to give no respect to the bowler on a hat-trick delivery, and now he's going to perish. Must be some sort of a record. 2 outings, 2 golden ducks for Bilal in this tournament. He walks back in disgust. NJS Cuisine 160 for 7.
We have seen the first 100 of this tournament being scored tonight, and right now we are witnessing, well, we just witnessed the first hat-trick being picked by Humaid Waqas. Both coming in the same match, in the same innings. That's the first run he has conceded. Humaid Waqas, they're looking to come back for the second, but I don't think that's going to be the case. Saad just asking his partner to stay out there. But what a brilliant over this was from Humaid Waqas. Just one run conceded, 3 wickets in it, a hat-trick included. 19 overs down, NJS Cuisine at 161 for 7. Abdullah Jamal to come and bowl the last over now of the innings. Starts off with a dot delivery now. The last couple of overs have been really good. In fact, if you consider, in fact, last 3 overs have gone in the favor of Himalaya packages. Yeah, Fizan Shoaib was a little expensive and 2 sixes were hit in his over, but apart from that, especially after losing Numan Bari, Himalaya packages have sort of made a comeback. Bowled it slower through the air, another chance for Tala Malik, but he did not go for the catch now. In fact, it was Faiz Chaudhary standing there at long off, and his brother Saif Chaudhary is asking him the question, why didn't he attempt the catch? Well, you can argue, but that might have been the right decision to make, because you never know, we would have dropped that catch and the ball would have deflected off his body. That could have run away for 4, so he decided to wait. And in the end, it's just a single is what they managed. Bowls it slower through the air. Chance for the wicket keeper. Ibadur Rahman will readily accept that one. Abdullah Jamal gets another wicket. Both Humaid Waqas and Abdullah Jamal have completely changed the complex of this game in the last couple of overs. 3 wickets for Abdullah Jamal now, as well as Saad now walks back. It's 162 for 8 NJS Cuisine. Looking to come back for the second run, should be another run out, but not going to be the case. The ball just bouncing a little more when it landed on the turf. Mubashiran were getting off the mark with a couple. Now they're going to be looking to get as many runs as possible. This is the joint highest team total in this edition of Delhi Premier League. Remember, the Lighters got 164 in their very first match against Bluebird. NJS Cuisine have got 2 more balls left to add as many runs as possible. Ideally, they will hope that they can get a couple of boundaries, or one at least. Brilliant yoga.
Abdullah Jamal, well, he's just bowling his third over, but what a difference he has made in his spell. 3 for 25. Now remember, he was the one who got rid of Numan Bari when he was on 101 and could have done more damage. But he got his wicket courtesy of a slower delivery. Now one more ball left in the innings. Abdullah Jamal to bowl that one. Bowls a full toss. The ball goes towards long off. Faiz Chaudhary does the right thing. It's not going to be a run out. In fact, it is a run out. It's a direct hit at the non-striker's end. The umpire has already raised his finger, so the third umpire won't be bothered. That means another wicket comes at the last ball of the innings, and they could only score one run towards the end. A brilliant comeback for Himalaya packages. 165 is what NJS have managed in their 20 overs. Could have been a lot more had Numan Bari stayed out there till the end, but the way Humaid Waqas and Abdullah Jamal bowled towards the end, I think it was very special effort. We saw a shuffle in their top order tonight. If you talk about NJS Cuisine, who won the toss, decided to bat first. Saqib Ikhlas came out to open the innings, was the first man to be dismissed. Yahya Rizwan coming in at number 3, and what a big partnership we witnessed between the two left-handers, Numan Bari and Yahya. Yahya scoring 23 before he got himself run out at the non-strikers end. Numan Bari completed the first ever century of this edition of Delhi Premier League. He scored 100 of 56 deliveries, and after that we saw a flurry of wickets going down for NJS, and no batter really capitalizing of the last few overs. As far as the bowling is concerned, I think Faiz Chaudhary started off brilliantly with the new ball, the fast bowler. It was his first outing with the ball. He was the one who got that first wicket of the captain, Saqib Ikhlas, when he completely foxed him with a slower delivery. Ruman Mahmood also bowled well, got just hit for 22 runs. Unfortunately, couldn't pick up a wicket. Then no other bowlers could really make a difference in the middle stages until Abdullah Jamal and Humaid Waqas came in. Abdullah getting 3 and Humaid Waqas also getting 3 wickets along with a hat-trick. So 165 is what NJS Cuisine have managed in their 20 overs. The highest team total in this edition of Delhi Premier League Season 2. And if they want to win this one, Himalaya packages, they'll have to bat out their skins, especially their skipper, Faiz Chaudhary, who is also short of runs of late. DPL roars as the cricket play. Bats like thunder, hearts on fire. Dreams take flight, rising higher. DPL, hear the crowd scream. Chasing glory, chasing the dream. Every run, every wicket's goal. This is the anthem, bold and bold. From the pitch to the stands, feel the beat. Drums of the earth, stomping feet. Unity in the game we love. DPL shines like stars above. DPL, hear the crowd scream. Chasing glory, chasing the dream. Every run, every wicket's goal. This is the anthem, bold and bold. From the pitch to the stands, feel the beat. Drums of the earth, stomping feet. Unity in the game we love. DPL shines like stars above. Hands in the air, let the spirit flow. DPL fever, let the passion grow. Fast as the cheetah, fierce as the fight. Under the moon, we play all night. DPL, hear the crowd scream. Chasing glory, chasing the dream. Every run, every wicket's goal. This is the anthem, bold and bold.
every wicket's goal. This is the anthem, bold and bold. This is the anthem, bold and bold. From the pitch to the stands, feel the beat. Drums of the earth stomping feet. Unity in the game we love. DPL shines like stars above. Hands in the air, let the spirit flow. DPL fever, let the passion grow. Fast as the cheetah, fierce as the fight. Under the moon, we play all night. DPL, hear the crowd scream. Chasing glory, chasing the dream. Every run, every wicket's goal. This is the anthem, bold and bold. Drums are pounding in the night skies glow. DPL roars as the cricket play. Bats like thunder, hearts on fire. Dreams take flight, rising higher. DPL, hear the crowd scream. Chasing glory, chasing the dream. Every run, every wicket's goal. This is the anthem, bold and bold. From the pitch to the stands, feel the beat. Drums of the earth stomping feet. Unity in the game we love. DPL shines like stars above. DPL, hear the crowd scream. Chasing glory, chasing the dream. Every run, every wicket's goal. This is the anthem, bold and bold. From the pitch to the stands, feel the beat. Drums of the earth stomping feet. Unity in the game we love. DPL shines like stars above. Hands in the air, let the spirit flow. DPL fever, let the passion grow. Fast as the cheetah, fierce as the fight. Under the moon, we play all night. DPL, hear the crowd scream. Chasing glory, chasing the dream. Every run, every wicket's goal. This is the anthem, bold and bold. Drums are pounding in the night skies glow. DPL roars as the cricket play. Bats like thunder, hearts on fire. Dreams take flight, rising higher. DPL, hear the crowd scream. Chasing glory,
pitch to the stands, feel the beat. Drums of the earth, stomping feet. Unity in the game we love. DPL shines like stars above. Hands in the air, let the spirit flow. DPL fever, let the passion grow. Fast as the cheetah, fierce as the fight. Under the moon, we play all night. DPL, hear the crowd scream. Chasing glory, chasing the dream. Every we run, every wicket's goal. This is the anthem, bold and bold. Drums are pounding in the night skies glow. DPL roars as the cricket play. Bats like thunder, hearts on fire. Dreams take flight, rising higher. DPL, hear the crowd scream. Chasing glory, chasing the dream. Every we run, every wicket's goal. This is the anthem, bold and bold. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं DHS स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान क्रिकेट एकेडमी सब्ज़ादार से एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। यहाँ पर DPL सीज़न 2 का आज मैच नंबर 6 जिसकी अब सेकेंड इनिंग का खेल है खेला जाएगा। अब 166 रन के हदफ का ताकुब करेगी हिमालय पैकेजेस की टीम। आज पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ी शानदार है परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया NJS कुजीन ने की टीम ने, ख़ासकर आज नमान बारी ने बड़ी दिलकश इनिंग तराशी। आज उन्होंने सेंचुरी बनाई और ये पहली सेंचुरी भी थी DPL सीज़न 2 की। एम्पायर से इधर हो जा। एहसन ताहिर है पहले ओवर के लिए तैनात किए गए हैं। सैफ चौधरी
पहली गेंद और पहली गेंद पर धावा बोला और गेंद गई है बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। क्या ही शानदार कनेक्शन है, बल्ले के बीचों बीच खेले और गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाया। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेले और यकीनी तौर पर जैसा कि ये बल्लेबाज हैं सैफ और अब्दुल्ला इनिंग का आगाज़ करने के लिए आए हैं और पहली गेंद पर छक्के के साथ अपने अज़ाइम में का इजहार किया है सैफ चौधरी ने, जो कि टीम के कप्तान भी हैं। खासी जिम्मेदारियां रहेंगी इनके कांधों पर हैं। इस बार थोड़ा सा पीछे से गेंद की है और लेंथ को थोड़ा सा बढ़ाया है हसन ताहिर ने। किसी रन का इजाफा नहीं हो सका पिछली गेंद पर। आज बार भी उठाकर खेले, फील्डर मौजूद हैं, कैच हो सकता है और ये कैच है, ड्रॉप कर दिया है। जी हाँ, ये आसान सा कैच है, लगभग हाथों में आया और फिर हाथ से निकल के गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं समझता हूँ कि फील्डर की एक कोताही बल्लेबाज की यकीनी तौर पर मिठाई के तौर पर तस्वर की जाएगी, वरना मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आउट होने में कोई कसर छोड़ी नहीं थी। अभी इब्तदा है और रन ने यकीनी तौर पर पहली गेंद पर 6 आ चुके थे। उसके बाद जल्दबाजी का मुजाहरा करके अपने विकेट, बड़ी विकेट है मैं समझता हूँ। सैफ चौधरी ऐसे बल्लेबाज नहीं है जो ज़्यादा देर रुक कर खेलें, लेकिन ये वो वक्त है जहाँ पर इन्हें इनिंग को लेकर चलना है। और इस बार भी गेंद हवा में है और फील्डर 1 नहीं 2 नहीं 3 की ताकुब में, और इस दौरान दौड़ते हुए 2 रन मुकम्मल किए सैफ चौधरी ने। सैफ भी यकीनी तौर पर एक जाराना मिजाज बल्लेबाज हैं और ये दिल्ली कम्युनिटी की क्रिकेट में सबसे ज़्यादा नामवर खिलाड़ियों में इनका शुमार होता है। और जैसा कि ये बारियां माजी में खेल चुके हैं, तो इनकी जाराना मिजाजी को देखकर ये कहा जा सकता है कि आज इनके इर्द गिर्द ये इनिंग घूम सकती है अगर ये इनिंग को तब्दील करना चाहे। लेकिन अब तक जो पहला शॉट था यकीन तौर पर वो थोड़ा सा महफूज था, लेकिन उसके बाद 2 बार जो शॉट्स खेले हैं उनमें यकीनन कहीं ना कहीं मुश्किलात ज़रूर थी इनके लिए। इस मरतबा संभल कर ड्राइव किया, बॉलर के हाथों में आई है गेंद और किसी रंग का कोई इजाफा नहीं। साथ साथ ये ओवर भी जाता रहा। पहले ओवर का खेल मुकम्मल हुआ। पहले ओवर के बाद मजमूई स्कोर है 14 और बनाने हैं फतह के लिए 166। From the pitch to the stands, feel the beat, drums of the earth stomping feet. Unity in the game we love, TPL shines like stars above. TPPL, hear the crowd scream, chasing glory, chasing the dream. Every run, every wicket's gone, this is the anthem, bold and bold. पिछले ओवर में यकीनी तौर पर एक नई जिंदगी मिली सैफ चौधरी को और अब्दुल्ला सामना करेंगी। और लाजवाब शॉट और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इस मरतबा डीप को कॉर्नर की जानिब खेले और क्या ही गोली की मानिंद है गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया अब्दुल्ला ने। और इस मरतबा अच्छी गेंद अपील की है, लेकिन एम्पायर ने इसे यकसर मुस्तरद कर दिया। ये थोड़ी सी डाउन द लेग साइड भी थी, थोड़े और मैं समझता थोड़ी सी हाइट पर भी जाती हुई गेंद दिखाई दी है।
मोहित सुल्तान से आगाज किया है फार एंड पर। दूसरे ओवर के लिए एक दफ़ा मोहित सुल्तान ने बॉलिंग के लिए लाए गए हैं। दाएं हाथ से लेग ब्रेक गेंदबाजी करते हैं। और इस मरतबा गेंद को फिर से डीप कॉर्नर एरिया की जानिब खेले और रेफील्डर की एफर्ट यहाँ पर हराएगा गई है और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। आखिरी लम्हात तक सरतोड़ कोशिश जारी रखी फील्डर ने, लेकिन अपने मकसद में नाकाम रहे और गेंद बाउंड्री रोप को छू गई। ये वो मंजर जहाँ से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई है। शेख ने भरपूर कोशिश की थी। आज सबसे बड़ा टोटल इस टूर्नामेंट को बनाने में कामयाब हुई है NJS कुजीन ने। इस मरतबा शॉर्ट कवर एरिया की जानिब खेले, नज़दीक भी फील्डर मौजूद हैं। बिलाल फिलहाल उन्होंने अपने हाथ में रखा गेंद को और अब विकेट कीपर की जानिब कर दिया है और इसी के साथ साथ दूसरे ओवर का खेल भी जाता रहा। 2 ओवर के बाद 11 की औसत से 22 बिना किसी विकेट के नुकसान पर हिमालय पैकेजेस बैठ के पकड़ेगा साथ, सही है। शाबाश एहसान। हाँ मुबश्शिर। जगह पर पहली गेंद खाली खेले एहसान ताहिर है अपने खोटे का। ये दूसरा ओवर करते हुए पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी और उठाकर खेल दिया। इस मरतबा बिल्कुल सीधा खेले और गेंद फदाओं में बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन के लिए बुलंद वाला, बहुत ही उम्दा, बहुत ही आला, पूरे 6 वाला। हमारे कैमरामैन के बिल्कुल सर के ऊपर किया था बार और गेंद आउट ऑफ द पार्क। दिमाग लगा। एहसान ने कि पिछले ओवर में भी एक बुलंद बाला छक्का लगाने में कामयाब हुए थे सैफ, और वही सिलसिला जारी है इस ओवर में भी। इस मरतबा अच्छी लाइन के साथ गेंद की थी और फील्डर की मौजूदगी में किसी तरह का कोई इजाफा नहीं। मिड ऑफ रीजन में मौजूद थे अनस इकबाल। 30 गज के दायरे में तमाम फील्डर मौजूद हैं महज 2 खिलाड़ियों के अलावा। और इस मरतबा ऑन साइड की जानिब खेलने का इरादा मकसूद था, लेकिन गेंद और बल्ले के दरमियान मिलाप न बना सके। ये गेंद खाली गई। आज हिमालय पैकेजेस की जानिब से नौजवान होनहार है, एक ताकतनाक मुस्तकबिल के हामिल लिए गेंदों पर है। बाएं हाथ की गेंदबाज उमैद वकास ने हैट्रिक बनाने का एजाज़ हासिल किया। उन्होंने अपने वाहिद ओवर में 1 रन के बस 3 खिलाड़ियों को लगातार 3 गेंदों पर आउट करके हैट्रिक बनाई और ये पहली हैट्रिक भी थी इस टूर्नामेंट की। अच्छा फील्डर रहे गेंद के ताक़ुब करते हुए और इस दौरान 2 रन का इजाफा किया स्कोर में। पॉइंट एरिया की जानिब खेले, इस बार भी स्क्वायर ऑफ द विकेट खेल कर 2 रन का इजाफा किया स्कोर में सैफ चौधरी ने। आज सैफ को यकीनन बड़ी बारी खेलनी होगी, लंबा करना होगा अपनी इनिंग को। और एक यकीन तौर पर नादिर मौका भी मिला है इब्तदा में ही और इस मरतबा गेंद आउट ऑफ द पार्क। डीप बैक कवर के ऊपर से खेले और क्या ही कमाल खेले और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन के लिए ऑफ साइड के बाहर पड़ी हुई गेंद खासे दूर से खेलने चले और क्या ही शानदार कनेक्शन
और गेंद फजाओं में झूलती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर गई। इस ओवर में 2 छक्के रसीद किए एहसन ताहिर के। 3 ओवर में मजमूई स्कोर हो गया 36। 12 की औसत से अब रन बनाए गए हैं। पहले 2 ओवर में 11 की औसत थी और अब 3 ओवर के बाद 12 की औसत जा पहुंची है। आज 2 कारनामे एक ही मैच में, पहली सेंचुरी भी और पहली हैट्रिक भी। पहली सेंचुरी यकीन तौर पर नौमान बारी के बैट से आई, जिन्होंने आज बड़े फलक शगाब बुलंद बाला छक्के भी लगाए अपनी इनिंग में और 56 गेंदों पर निफ सेंचुरी बनाने का एजाज़ हासिल किया। और आज हुमैद वकास ने अपने एक ही ओवर में 3 खिलाड़ियों को आउट किया लगातार 3 गेंदों पर। तो आज वो हैट्रिक बनाने में कामयाब हुए हिमालय पैकेजेस की जानिब से। एक ही बंदा अच्छा लग रहा है। हेलो, पूरे ग्राउंड में एक ही बंदा अच्छा लग रहा है। इस बार वाइड बॉल का इशारा एम्पायर की जानिब से मौसूल हुआ है। मुबशिर अनवर को अब बॉलिंग में तब्दीली करके लाया गया है, बहुत जल्द है बॉलिंग में तब्दीली की गई है। इससे पहले मोहित सुल्तान ने ओवर कर रहे थे और अब उनकी जगह पर है फार एंड की जानिब से बड़े तजर्बेकार है ये गेंदबाज हैं और लाइन लेंथ बड़ी शानदार रहती है। लेकिन इस मरतबा मिड विकेट की जानिब खेली जहाँ पर साकिब इखलास बल्कि ये शेख है उबैद मौजूद थे जिन्होंने गेंद को फील्ड किया है और 1 रन तक महदूद किया अब्दुल्ला को। बड़ी तेज़ी के साथ खेलते हुए 26 रन बनाए हैं अब तक सैफ चौधरी ने। विकेट का जो मिजाज है यकीनन तब्दील हुआ है और बैट्समैनों को कोई ज़्यादा मुश्किलात अब दरपेश नहीं आ रही। इसका बरमला आसार किया, गेंद को फजा में खेला और गेंद फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। और रिवेंच है मैं समझता हूँ कि यहाँ पर लेते हुए पिछली इनिंग का इस मरतबा लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़ी तवील खामद हिट लगाई है और ये यकीनन खासा भी है सैफ का। अच्छा कदमों का इस्तेमाल किया और मिडल ऑफ द बैट खेल कर लॉन्ग ऑन के फील्डर के ऊपर से खासी ऊंची खेल दी। बड़ी हिट के जरिए 6 रन यहाँ पर मजीद हासिल किए। 34 पे जा पहुंचे हैं सैफ। दिल्ली कम्युनिटी की सबसे तेज़ तरीन सेंचुरी बनाने का भी रिकॉर्ड इनके पास मौजूद है। इन्होंने 14 गेंदों पर सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर रखा है। इनके बाद देखा जाए तो यकीन तौर पर अली नासिर हैं जिन्होंने 15 गेंदों पर सेंचुरी बनाई है। वो बाएं हाथ के बैट्समैन हैं। और हैरत अंगेज तौर पर ये दो यहाँ पर रन आउट हो सकते थे, बाल बचे, जल्दी करनी पड़ी। मैं जिक्र कर रहा था 2 तेज तरीन सेंचुरियों का और एक ही मैच में और एक ही पार्टनरशिप में बनी थी, जहाँ 14 गेंदों पर सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए थे सैफ चौधरी और इनके पीछे 15 गेंदों पर सेंचुरी बनाई इन्हीं के साथी बल्लेबाज अली नासिर ने, जब ये आयरलैंड का हिस्सा थे। इस मरतबा गेंद को दिफाई अंदाज से खेला है और बॉलर की जानिब धकेल दिया, किसी रन का कोई इजाफा नहीं, साथ ही ओवर भी मुकम्मल हुआ। तो 4 गए 45 से बिना किसी विकेट के नुकसान पर हिमालय पैकेज से यकीन तौर पर जो गोल है उसे पूरा करते हुए यकीन तौर पर पहले 4 ओवर में यकीन शानदार अंदाज से एग्जीक्यूट करते हुए दिखाई दिए सैफ चौधरी। मसनवी रोशनियों के उजाले में ये मैच जारी है। कराची का एक मशहूर मारूफ और
दिलकश है क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ की विकेट है, लेकिन दोबारा बल्लेबाजों के लिए खासी साजगार दिखाई दे रही है। एक ग्रीन टॉप है, आउटफील्ड है जिस पर गेंद भी खासी तेज़ी के साथ ट्रैवल कर रही है, तो कोई ज़्यादा नामुनासिब हालात नहीं है, बल्लेबाजों के लिए खासा आसान हो चला है। जैसे कि पिछली इनिंग में हमने देखा बड़ी शानदार है बैटिंग का मुजाहरा किया आज एनजेएस के बल्लेबाजों ने, ख़ासकर नुमान बारी ने एक बड़ी दिलकश सेंचुरी बनाई। इस बार संभल कर खेले बॉलिंग में, अब फिर से तब्दीली की गई है। अब बॉलिंग में मोइज सुल्तान को एंड चेंज करके लाया गया है, पहले फार एंड से आए थे और इस मरतबा पॉइंट के फील्डर के सर के ऊपर से गेंद को क्लियर और गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन से बाहर, तो रन मिले यहाँ पर 4। पॉइंट एरिया पर है, यकीनी तौर पर गोली दागी है मानो। और फिर से खेले और एक टिप्पा खाने के बाद लगता है कि शायद गेंद, लेकिन नहीं, एम्पायर ने दोनों हाथ फजा में उठाने का फैसला किया। जी हाँ, ये 6 रन है। बैकवुड पॉइंट और पॉइंट के दरमियान खेल कर ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाई है। शानदार छक्का यहाँ देखा जा सकता है। पहले चौका और इस बार छक्का। ऑफ साइड पर खासे स्ट्रॉन्ग वाक़े हुए हैं और हमेशा ही ये इनका खासा स्ट्रॉन्ग एरिया रहा है। जब भी ऑफ साइड के बाहर आप गेंद करते हैं तो फिर ऐसे ख़तरात आपके लिए मंडलाते रहेंगे जब सैफ चौधरी बैटिंग पर मौजूद हों। इस तरह की गेंदों पर हमेशा ही वो बड़े झाराना आते हैं और आड़े हाथों उन्होंने लिया है अब तक इस ओवर को। एक चौका और एक छक्का लगा चुके हैं इस ओवर में। पहली गेंद को यकीनन संभल कर दिफाई अंदाज से खेले थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी जो जाराना मिजाजी है उसको यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। और इस मरतबा बैकफुट पॉइंट एरिया में खेले, क्या ही कमाल खेले, फील्डर ने किया ताकुब, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। एक के बाद दीगरे यहाँ पर बाउंड्री से लगाने का सिलसिला जारी हो चुका है और आज पहले दूल्हा भाई ने लगाई पिटाई और अब यकीनन बरादर निस्बती भी अब बल्लेबाज के रूप में आए हैं, तो यकीन तौर पर बॉलर्स को आड़े हाथों ले लिया है सैफ चौधरी ने। आज नुमान बारी की सेंचुरी के बाद यकीनन रिवेंज के तौर पर सैफ चौधरी उसी अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मजमुआ हो गया है 59। ये 5वें ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए एक मरतबा फिर इस मरतबा ऑफ साइड के बाहर पड़ी हुई गेंद जिसे बैकवर्ड पॉइंट एरिया में खेले, यहाँ पर फील्डर मौजूद थे शेख और ये गेंद खाली गई, इस पर कोई रन हासिल ना कर सके। और 5 ओवर के बाद 59 मजमूई स्कोर है बिना किसी विकेट के नुकसान पर हिमालय पैकेजेस का। From the pitch to the stands, feel the beat. Drums of the earth stomping feet. Unity in the game we love. 9 after 5 overs for Himalaya packages in pursuit of 165. Might be another wide down the leg side from Mubashir Anwar. Abdullah on strike right now, run a ball 9, and so far he has played the role of a silent partner in this opening stand. Whereas if we talk about Saif Chaudhary, he has raced away to 49 of just 21 deliveries. So the runs are coming between the family tonight. We saw the brother-in-law getting a much-needed century in the first innings, Numan Bari, and now the nicely timed
Excellently placed by Abdullah. He might not get a boundary. It's going to be a couple at least. We're talking about Numan Bari getting a century in the first innings, and now Saif Chaudhary, younger brother, just one run away of what would be his first half century of this tournament. Another wide down the leg side. This time Yahya Rizwan couldn't gather that one. There was no one at fine leg. Look at the amount of distance the fielder at square leg will have to cover. Saif Chaudhary wants to come back for the third, but I don't think they're going to make it in the end. And tell you what, that throw, had that been on point at the stumps, might have been a goner there, Abdullah, because his bat was well outside the crease. But once again, 3 more important runs added. The required run rate is almost touching 6 and over. It started off at more than 8. Gets his man now, Mubashir Anwar. He was looking to sweep that ball again. Abdullah trying to hit that towards his favorite mid-wicket region, completely missing the line of that ball. And Mubashir Anwar picks up the first wicket, bowled him round his legs, and breaks the opening partnership. A much-needed wicket for NJS Cuisine, but a valuable contribution from Abdullah, especially in this partnership. Not because of the many runs that he got, but at least he stayed out there for Saif Chaudhary. He walks back after scoring 11. It's 65 for 1. So first wicket gone down for Himalaya Packages in pursuit of 165. Now they just need 100 more runs to win. 9 wickets still in tank, and the experienced Umar Loya walks in at number 3. Was among some runs in the first match, Umar Loya, when he scored 40 odd runs, got a couple of wickets too. Got out on a low score in the next game. But tonight, the fact is that his team has got out to a flying start, courtesy of that brilliant knock from Saif Chaudhary, who is still out there at non-strikers. And so Umar Loya can afford to take some time. Good over so far from Mubashir Anwar. Couple of wides, but he came back strongly and got rid of Abdullah. Pretty packed offside field for Umar Loya, and that's why Mubashir Anwar is keeping it outside the off stump. Didn't offer any stroke whatsoever. Another dot delivery from Mubashir. Brilliant over from the left arm spinner comes to an end. The batting power play is done. Himalaya Packages have raced on to 65 for 1.
So we saw 6 runs coming in the previous over from Mubashir Anwar along with that wicket of Abdullah. And now that means they can open up the field a bit since the batting power play is done, and we will see the centurion of the first innings, Zaman Bari, for the first time with the ball in this innings. Straight away hits it hard, chance for long off, and he puts it down. And not only did he misjudge it, but that's gone all the way for 4-2. Would have been a perfect day for Numan Bari. Could have got the wicket of the very first delivery, but not to be. And instead, his brother-in-law gets to a half century. And that too of just 22 deliveries. Earlier, we heard Imran Azam mentioning that Saif has got the record of scoring the fastest half century in this daily community. That came of 14 deliveries. Tonight, he has taken a little longer than that, but scoring runs where his team needed the most. But the job is not done yet for Saif. He knows that the style of cricket at which he plays, he's the only player in the team who can do that. No other player in this batting lineup can match that. Faster one attempted. Another chance to the fielder at long off. Will he be able to get it? He did get there, but puts another one down. And he's on the ground. Probably in disgust. They're going to come back for another run because of the overthrow. But look at Numan Bari. Straight away, he's asking someone else to go and stand there at long off. And who else? It was Anas Iqbal, who is a very good fielder. It was a faster one. Saif looking to go downtown. He got there, just looking to take that catch in that reverse cup style. And look at that disappointment there. He was on his knees and head down and just couldn't make eye contact with his fellow teammates or the bowler especially. Flighting it up. It's up. Chance for long on this time. He gets there. Will he take it? He does. It's Ehsan Tahir who doesn't make any mistake this time. Third opportunity created by Numan Bari. Finally, a fielder manages to take one. Saif Chaudhary could have learned from his mistake he committed earlier in this over, but not the case. He went for another one, tried to get it wider of the fielder at long on, but unfortunately that was taken comfortably by Ehsan Tahir. He's too good a fielder to miss out on that one, but what a wonderful, entertaining knock. It comes to an end. You can laugh about it, but that was an electrifying start that was provided by Saif Chaudhary. He walks back after scoring quick fire 55 of just 25 deliveries. They are 71 for 2. Couple of wickets have now gone down. That brings Ibadur Rahman at number 4. The left-hander walks in. 2 new batters at the crease now for Himalaya packages. Both yet to get off the mark. Flighting it up, nicely stopped. Now they are looking for the single.
and they're going to get it in the end. Now look at the ball where it finished, just behind the stumps at the non-striker's end, and even then they managed to go for a single. That shows the fielder were slightly on the back foot, but a pretty decent start for Numan Bari. 100 in the first innings, a wicket in the very first over. Couldn't have asked for anything better than that. 7 overs done, it's 72 for 2. So NJS Cuisine can afford to relax a bit, especially after seeing the departure of Saif Chaudhary in the previous over. Another fumble from the fielder. This time it was Numan Bari. And Ibadur Rahman will pick up another single. Now these two batters, these two gentlemen out there, we know that they are slow starter of the innings, but they got the start they were looking for, Himalaya packages, and you need to make sure that they can at least score 6 or 7 on every over. Now that can happen without taking many risks. Singles and twos are not that hard to get, knowing the fact that they've just got 4 fielders inside the inner ring and the rest of the fielders are standing at the edge of the boundary ropes. Just need to make sure that they keep the scoreboard moving, and their run rate, which is 10 and over, at least they can maintain that to 8 or 8.5. First run of the bat for Umar Loya. Now you saw what Saif Chaudhary did while opening the innings. He's not going to look to replicate that because he's got his own style of play, but he would love to contribute with the bat tonight and towards his team's victory. Remember, these two teams, well, it's not their first match of the tournament. It's the second one for NJS Cuisine. They got off to a losing start. It's the third one for Himalaya packages. They have won one, they have lost the other. So now, as far as Himalaya packages is concerned, they are into the business end of the tournament, because after this one they'll be just having 2 more matches remaining, and if they lose this one, then the next 2 will be must-win games. Trying to use his feet, not getting from the middle of his blade. He also looked at the bat, but will still get a run towards long on. Now what are the other bowling options that NJS have got? They have tried Ehsan Tahir, they have tried Mubashir Anwar. Saqib Ikhlas can bowl. Numan Bari has got that wicket. Lovely delivery. As a left-arm spinner, when you bowl slower through the air, I think you become even more difficult for the batter. And there are more chances for you to get wickets. We saw that happening in the first inning where Humaid Waqas kept it outside the off-stump and bowled it slower through the air. Although he was bowling in the 19th over of the innings and still managed to get 3 wickets, that was a hat-trick, the first one of the tournament. Meanwhile, 4 runs coming in that over, 8 overs done. Himalaya packages are 76 for 2. Two left-arm spinners in pursuit. Both have got a wicket each. Still coming over the wicket, Numan Bari. I think it's going to be, once again, a good competition between him and Umar Loya. We all know how well Umar Loya can play against the spin. But even he needs to watch out for that faster one. Comes down the track, hits it in the air. Anas Iqbal, well, he decided not to attempt the catch on that one because once again the ball was curling away from him. Another mistimed stroke from the right-hander, but he's going to get a couple this time, Umar Loya. And I'm pretty sure he's got the reason for not to try that shot again.
Much slower through the air from Numan Bari. Was into the pitch, could have hit that anywhere, Umar Loya, and I think he knows that because he might have missed the opportunity of getting a few more runs under his belt. Comes down the track. Now, does he time it well enough? I don't think he does. He doesn't. It's another one that has gone down begging, and another ball that has gone over the boundary ropes for another 6. And look at Numan Bari. Slower through the air, comes down the pitch. I think the breeze is not strong, but the ball just kept going, and Hassan Tahir in the end just not realizing that he was slowly getting much closer to the boundary ropes. By the time he realized, it was a little too late, and he even tried to pull the ball back with his left hand, but that couldn't happen. So Umar Loya doing exactly what we expected. He's making sure that they get at least 6 or 7 runs every over. If the singles and twos are difficult to come by, so he's going to attempt those big shots. He's tried a couple of them in this over. One went wide of that fielder at long off where he fetched 2, and then the other one went over Hassan Tahir for a 6. And easily he is going to get another single towards deep extra cover. So good over, good productive over for Himalaya packages. 9 overs done. They are 85 for 2. So Mubashir now into his last over of this innings. And from this end, they'll have to find a different bowling option. NJS Cuisine deliberately playing that one late towards short third. Will get another run, Umar Loya. And they've also got Abdul Moiz Sultan, who was a touch expensive when he took on the new ball. But on that, during that time, it was Saif Chaudhary who was out there. They've also got tall leg spinner Khurram Dilawar. Where is he standing? He's standing right now at long on. Kickish outside edge. Anas Iqbal will get down to the ball. Ibadur Rahman wants to come back for the second. A flat throw, but he'll make it in the end. Both these batters have looked busy. We haven't seen these two gentlemen wasting any time at the crease whatsoever. Even if they have faced few dot deliveries, they have made sure they have make up for it. Good delivery. Just getting a little off balanced. Yagir Rizwan appealing for stumping, and after considering and thinking for a bit of time, that umpire has deferred that decision upstairs. So third umpire will have to have a look at that, whether Ibadur Rahman, well, he dragged his foot outside the crease or not. One thing is for sure, he did move, but whether his foot was stationary or not, the replay will suggest that. So the replay just confirmed that Ibadur Rahman might have got a little off balance, but his foot was still inside the crease.
And Yair Rizwan, well, his attempt of getting another wicket for his team gone in vain. Mubashir Anwar would have loved to get another one under his belt. Remember, it's his last over. He's got that wicket once. Would have been better for NJS Cuisine if they had broken this partnership before it started proving to be a lot more threatening. A bit of a chip, but in the gap between extra cover and the bowler. Good going so far from Himalaya packages, maintaining their run rate over 9. They'll continue to do that if they can pick up singles on regular intervals. Now, 165 is not a small total, looking at the way teams have performed and the pattern of the tournament, when even a target of 135 has been difficult to get. But the fact is that Saish Chaudhary, he started going for the big shots right from the start of the innings. In fact, the very first ball of this run chase went for a 6 over long off. Hits it hard, just wide of the skipper at extra cover. It's in the gap. Bilal Ahmed had to run from his position at long off. Does a really good job in the end, diving, tumbling effort, saving 2 runs for his team. Couple to end the over. Mubashir is done with his spell tonight. 10 overs done. Himalaya packages are still in a pretty decent position. Yeah, they're in fact 92 for 2. दस ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है और 92 मजमूई स्कोर है। 2 विकेट के नुकसान पर कप्तान ने बॉलिंग की जिम्मेदारी ली है। ओलियन एंड की जानिब से ऑफ साइड के बाहर पड़ी हुई गेंद से स्लैश किया इस मरतबा डीप गली और बैकवर्ड पॉइंट के दरमियान से बासानी 2 रन यहाँ पर हासिल किए। अच्छा बड़ा गैप, फील्डर खास से दूर मौजूद थे और जगह तलाश करते हुए 2 रन यहाँ पर मुकम्मल किए। उमर लोया ने आज बड़ी शानदार निप सेंचुरी बनाई टीम के कप्तान ने सैफ चौधरी ने, लेकिन उसके बाद से ये दोनों बैट्समैन विकेट पर बरजमान हैं। अच्छी काविश है इन दोनों बैट्समैनों की अब भी जारी व सारी। साकिब इखलास एक बार फिर अपने बॉलिंग के मार से राइट आर्म ओवर द विकेट। इस मरतबा बिल्कुल नफासत के साथ सहलाते हुए गेले गेंद को शॉर्ट साइडमैन एरिया की जानिब गेंद के ताक़ुब में फील्डर पहुँचे, 1 रन तक महदूद किया। मजमूई स्कोर हो गया है अब 95। के बाद
सामना कर रहे थे। ये लेग साइड से खासी बाहर गेंद थी, वाइड बॉल का इशारा दिया एम्पायर है नईम अहमद खान ने। एम्पायर नईम अहमद खान ये गेंद पर बड़े शानदार है, एम्पायर भी हैं, साथ साथ माजी में विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं। नेशनल बैंक की नुमाइंदगी की कदमों का इस्तेमाल किया, इस बार है और लोया ने फील्डर के लिए मौका, जी यहाँ पर कैच ड्रॉप किया। इस बार मुबशर अनवर पेश दिखाई दिए जिन्होंने ये कैच ड्रॉप किया है। और साकी ख़ताएँ यकीन तो बस सज़ाएँ बनकर उभरेंगी अगर इसी तरह ये फील्डिंग का मैयार रहा। बिल्कुल भी खुश नहीं है, कोसते हुए दिखाई दिए साकिब इखलास से अपने फील्डर को। और अब तक फील्डर की जानिब देख रहे हैं। मैं समझता हूँ ये मुबशर अनवर जिस तरह के कैचेस माजी में पकड़ते रहे हैं और उसके मुकाबले ये एक बहुत आसान कैच और डॉली कैच यहाँ पर ड्रॉप किया है। इबाद ने इस पर गेंद को सीधे बैट के साथ वापस बॉलर की जानिब रवाना किया, किसी रंग का कोई इजाफा नहीं। आज ये बड़े मैं समझता हूँ कि फील्डिंग में लैप्सेस से देखने में आए हैं। एक कैच है इब्तदा में ही छूटा था, उसके बाद निफ सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए सैफ चौधरी। और अब यहाँ पर 11 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ। 11 ओवर के बाद 99 मजमूई स्कोर है, 2 विकेट के नुकसान पर। की औसत से रन बनाए गए हैं अब तक के खेल में। खुर्रम दिलावर जिन्हें बॉलिंग के लिए अब लाया गया है, इनकी पहली गेंद पर बड़ी हिट लगाना चाहते हैं। फील्डर ने इस बार भी कैच ड्रॉप कर दिया है। इस मरतबा दानियाल ताहिर थे जिनके हाथों से निकली गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। आज ऐसे फील्डरों ने कैच छोड़े हैं जिनसे यकीन तौर पर बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी कि वो कैच ड्रॉप कर सकते हैं। आज यकीनन फील्डिंग में खासा गैर मेयारी खेल दिखाया है NJS के फील्डर्स ने, और बॉलर्स यकीनी तौर पर अपनी शानदार बॉलिंग के नतीजे में विकेटें भी हासिल न कर सके। इस बार गेंद को खेल दिया स्क्वायर एरिया की जानिब, जहाँ पर फील्डर मौजूद है, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के नज़दीक गेंद को रोका और एक ही रन यहाँ पर बनाया है इबादुर रहमान ने। मैच यकीनी तौर पर अब बैटिंग साइड के लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल दिखाई नहीं दे रहा। महज 2 विकेटें गिरी हैं, अभी 8 विकेटें बाकी, और फील्डर ने भी बड़ा साथ दिया है। अगर वो मिलने वाले मौक़ों को अगर ज़ाया नहीं किया जाता तो यकीनी तौर पर बैटिंग साइड शदीद दबाव का शिकार होती, लेकिन ये खेल का हिस्सा है। खुर्रम दिलावर है जिन्हें प्यार से केडी के नाम से जाना जाता है इनकी क्रिकेट के हलकों में। ये अच्छी गेंद थी जिसे अपनी जगह पर खड़े खड़े हल्के से कट करते हुए शॉर्ट सेटमैन और गली के दरमियान खेलकर सिंगल लिया।
उमर लोया खासी देर से विकेट पर मौजूद हैं, 18 रन बनाए हैं। और अब सामना करेंगे इबादुर रहमान, विकेट कीपर बैट्समैन, अच्छा लंबा कद है, मजबूत जिसामत के हैं और बैटिंग को लंबा करना जानते हैं। ये उन बल्लेबाजों में से नहीं है कि जो जल्दबाजी करके अपनी विकेट थ्रू करें, यकीनन ये विकेट पर ठहरने का हुनर भी जानते हैं और बड़ी हिटें यकीनी तौर पर लगाना भी जानते हैं। अभी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं, यकीनन मुश्किल वक्त है में आए बगैर ये मैच जीतना चाहती है इनकी टीम। और इस बार सामना करेंगे खुर्रम दिलावर का, कदमों का इस्तेमाल किया उमर लोया ने और गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन एरिया की जानिब, जहाँ पर नुमान बारी मौजूद थे। अच्छी थ्रो नुमान बारी की सीधी विकेट कीपर की जानिब, 1 रन का इजाफा किया उमर लोया ने। बढ़ता हुआ स्कोर हो गया 107। 12वें ओवर का खेल जारी है। और इस बार हल्के से जस्ट ग्लाइड किया है और बड़ी तेज़ी दिखाई यहाँ पर। और ये मैं समझता हूँ कि बड़ी हाजिर दिमागी है बल्लेबाजों की, ये देखते हुए फील्डर थोड़े से पीछे हैं, जब तक भाग कर पहुँचेंगे कुछ वक्त ज़रूर लगेगा। और यहाँ दोनों बैट्समैन ने बड़ी तेज़ी के साथ दौड़ कर बिजली की तेज़ी से 2 रन मुकम्मल किए। 12 गए, 109, 2 विकेटों के नुकसान पर हिमालय पैकेजेस, जिन्हें जीतने के लिए आज 166 रन का हदफ मिला है। Shines like stars above. Hands in the air, let the spirit flow. BPL fever, let the passion grow. Fast as the cheetah, fierce as the fight. Under the moon, we play all night. BPL. ताला मल्ले के आने वाले बल्लेबाजों में पैट किए हुए अपनी बारी के मुंतज़िर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मतवक़ा तौर पर जो नए आने वाले बैट्समैन होंगे वो ताला मलिक होंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों पर कड़ी जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं कि वो विकेट पर ठहरें, क्योंकि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है बैटिंग साइड का। सब चीज़ें हाथों में मौजूद हैं बैटिंग साइड के। आज अगर मैं समझता हूँ कि नुमान बारी का दूसरे एंड से भी साथ होता और दूसरे एंड से भी रन बनते थे, लेकिन तो पर एक बड़ा टोटल बनाने में कामयाब हो सकती थी NJS कुजीन की टीम। लेकिन एक बेहतर माकूल टोटल ज़रूर बनाया है, लेकिन तना आज नुमान बारी ने जंग लड़ी है बैटिंग में। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों बैट्समैन कितनी तवील इनिंग खेलने में कामयाब होते हैं। इस मरतबा कवर्स की जानिब खेलने में कामयाब हुए, 1 रन का इजाफा किया। बिलाल मौजूद है गेंद को फील्ड करने के लिए। 1 ही रन तक ये महदूद रहे दोनों बैट्समैन। स्कोर अब नेल्सन ऑन द बोर्ड है, 111, 111। साकिब तैयार गेंद करने के लिए। इनका सामना करेंगे उमर लोया, दाहिने हाथ के बल्लेबाज। ये वाहिद है फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं दिल्ली कम्युनिटी के, जो इस वक्त करंट है क्रिकेट का हिस्सा हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों ही इन्होंने अपना डेब्यू किया। और फिर इन्हें कोटा ग्लेडिएटर की टीम में भी बतौर एमर्जिंग प्लेयर शामिल किया गया था। तो यकीनन बहुत ज़्यादा एतमाद इनके पास मौजूद है। और जब अच्छी क्रिकेट में आप अच्छे खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम को शेयर करते हैं, अच्छे खिलाड़ियों के साथ वक्त स्पेंड करते हैं, तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो ख़ासे पुरएतमाद विकेट पर दिखाई दे रहे हैं उमर लोया। उमर लोया ने 21 रन बना रखे हैं, विकेट पर मौजूद हैं। 22 गेंदों को सामना किया है, 18 गेंदें खेल के 18 रन बना रखे हैं इबादुर रहमान ने। और इस बार लाजवाब खेले, इस बार एक कदम आगे निकाले
और पैडल स्विप करते हुए फुल टॉस गेंद को बाउंड्री लाइन के पार लगाया। 4 रन के लिए लाजवाब हिट और रन मिले 4। बड़ा ही कमाल है इस मरतबा क्रिएशन थी इबादुर रहमान की। एक वक्त को ऐसा लग रहा था कि शायद रिवायती स्वीप करेंगे, लेकिन फुल टॉस डिलीवरी को बेईमाना अंदाज से खेले और गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाया। अच्छा कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद को खेले हवा में, लेकिन फील्डर मौजूद, कोई गलती नहीं। यहाँ पर नोमान बारी ने यहाँ पर बारी समेट दी है। नोमान ने एक शानदार कैच के जरिए यकीनी तौर पर एक अच्छी बारी खेलते हुए बल्लेबाज है उमर लोया को चलता किया। बड़ी विकेट चटकाई यहाँ पर केडी ने, खुशी से निहाल है। यहाँ पर देखे जा सकते हैं वो चेहरे जो कि काफ़ी फील्डिंग में लैप्सेस के बाद एक शानदार कैच के बाद है, थोड़े से निहाल, थोड़े से खुश और थोड़े से पुरउम्मीद, क्योंकि अभी दिल्ली खासी दूर है। तो उमर लोया का हुआ डिपार्चर। इतनी देर करेगा तू? 21 कर रहे हैं, 21 22 से पहले ही थे, किसी ग्राम पीछे करते 21 कर रहे हैं भाई। हाँ पहले 18 थे, 22 के अंदर 18 थे। किसके? उमर लोया 21 रन बनाने के बाद चलते बने और अब नए आने वाले बैट्समैन देखना है कि जी हाँ तला मलिक है जो कि पैड किए हुए तैयार थे, अब वो अब नमूदार हुए हैं, तो विकेट पे वारिद हो चुके हैं। बड़े अच्छे जाराना मिजाज बैट्समैन हैं, नौजवान बल्लेबाजों की खेप में यकीनन तौर पर एक नुमाया नाम रखते हैं, ना सिर्फ बैटिंग में साथ साथ फील्डिंग में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस इनकी जानिब से हर बार देखने में आती है। लेकिन अब जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर बैटिंग की रहेंगी। बैटिंग में देखना कि आज अपनी टीम के लिए कितने कारगर साबित होते हैं। तला मलिक पहली गेंद जिस पर है, पॉइंट और कवर के दरमियान खेलना चाहते थे, इनसाइड एज हुआ, गेंद गई है थर्ड मैन एरिया की जानिब, गेंद के पीछे पीछे दौड़े चले गए हैं। मबशर रन पर बिल्कुल बाउंड्री की लाइन के नज़दीक गेंद अस खुद है मर्सी गई थी, जिसे फील्ड करने के बाद वापस किया और 2 रन का इजाफा किया स्कोर में। खासी दूर से ट्रैवल करते हुए गेंद तक पहुंचे थे। खुर्रम एक बार फिर इस मरतबा मिड विकेट जाने पे गेंद को खेल लिया है, जहां पर मौजूद हैं फील्डर है अनस इकबाल।
1 रन का इजाफा किया स्कोर में। ये कामयाब ओवर जारी है जिसमें एक विकेट चटखाने में कामयाब हुए उमर लोया की सूरत में। खुर्रम दिलावर बड़े सीनियर गेंदबाज हैं और दोनों जानिब ब्रेक करना जानते हैं। रॉन्ग वन भी इनके पास मौजूद है। 10 नंबर की शर्ट पहने हुए एक बार फिर तैयार हुए गेंद करने के लिए और बिल्कुल नज़दीक में ही फील्डर मौजूद हैं गली एरिया में और यहाँ पर रन आउट करने की पादाश में 1 रन ओवर थ्रो का मिल गया है। ज़रूरत इस बात की कि रन बचाए जाएं और रन बचाकर थोड़ा सा प्रेशर बनाया जाए। वहीं कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ आएंगी, कठिनाइयों में जोखम भरे शॉट खेलेंगे बल्लेबाज, वहीं कहीं ना कहीं विकेटें बॉलिंग साइड के लिए मौजूद हैं और बल्लेबाजों को यकीनन यहाँ पर थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ेगा। लेकिन इस बार कोई तहम्मुल का मुजाहरा नहीं किया और भरपूर कुव्वत भरी हिट खेली है और लॉन्ग लेके जानिब खेल कर चौका रसीद किया तला मलिक ने। तला मलिक के अज़ाइम कुछ और ही हैं। यहाँ देख सकते हैं कि किस अंदाज से यहाँ पर भरपूर कुव्वत से हिट लगाने में कामयाब हुए। गेंद पलक झपक से ही बाउंड्री लाइन को छू गई। बड़ा दबा स्कोर हो गया 124 से 3 विकेटों को नुकसान पर 14 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हुआ और अब 15वें ओवर का खेल खेला जाएगा। मसनूई रोशनियों के शबाब में ये एक शानदार मैच है। आलीशान क्रिकेट ग्राउंड है मोइन खान क्रिकेट एकेडमी के सब्ज़दार पर जारी व सारी है बसिलसिला DPL सीज़न 2। रंग बिरंगे पैराहन पहने हुए ये शानदार खिलाड़ी एक खूबसूरत मंजर पेश करता हुआ मोइन खान क्रिकेट एकेडमी का ये सब्ज़दार है। नुमान बारी फिर से जिम्मेदारी इनके कांधों पर, बॉलिंग की जिम्मेदारी लिए हुए बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, बॉलिंग के मार्ग पर मौजूद हैं। पवेलियन एंड की जानिब से फिर से आए हैं। इससे पहले 2 ओवर कर चुके हैं, 16 रन देकर 1 विकेट इन्होंने अपने नाम की थी। ड्राइव किया वापस बॉलर की जानिब, अपने फॉलो थ्रो में अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया है। यकीनन यहाँ पर है अब बैट्समैनों को विकेट बचाकर रन भी बनाने हैं। 23 पर जा पहुँचे हैं इबादुर रहमान ने। तला मलिक है जिन्होंने पिछले ओवर में 1 चौका लगाया, 5 रन के साथ विकेट पर मौजूद हैं। और इसी अंदाज से अगर बैटिंग जारी रही और यहाँ पर मिड विकेट की जानिब खेलकर 1 रन लिया, अच्छी थ्रो विकेट कीपर की जानिब की है शेख उबैद ने। और यही सिलसिला अगर जारी रहा, सिंगल डबल के साथ डील करते रहे बैट्समैन, तो यकीनन ये बैटिंग साइड के हक में जाएगा। यहाँ विकेट भी चटखानी है, रन भी बचाने हैं, बहुत कुछ करना है NJS कुजीन को, जो कि पहले ही एक फतह के ज़ख्म के साथ आज ग्राउंड में मौजूद है और 2 मैचों में 1 मैच जीता है हिमालय पैकेजेस की टीम ने और 1 में उन्हें शिकस्त हुई। और आज ये दोनों टीमें अगले 2 पॉइंट के लिए सरगर्दा हैं। इस बार रन आउट हो सकते थे, डायरेक्ट थ्रो रिक्वायर्ड थी, लेकिन रन आउट तो गुजा 1 रन और मिल गया है ओवर थ्रो की सूरत में। नुमान खासे नाला दिखाई दिए, नाराज़ हुए फील्डर से कि ये बिला जवाज़ है, रन आउट करने की कोशिश की गई, जिसके नतीजे में एक एक्स्ट्रा का रन भी चला गया है। ये अच्छी गेंद थी, दिफाई अंदाज से खेले और ये अच्छे बल्लेबाजों की पहचान है कि अच्छी गेंद हो तो यकीनन इज़्ज़त और एहतराम के साथ उसे रोक भी लिया जाता है। हर गेंद बड़ी हिट के लिए नहीं होती और इस बात को बखूबी जानते हैं तला मलिक। इस बार स्वीप किया गेंद को, क्या ही शानदार और भरपूर हेड लगाने में कामयाब हुए। गोली की मानी खेलते हुए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाई है। बड़ा ही शानदार पैडल स्वीप है, गोली की रफ्तार से गेंद है बाउंड्री को छूती चली गई।
तला मलिक जिनके कंधों पर जो जिम्मेदारी आई है, जो आए थे जिम्मेदारी, उसे एहसन अंदाज से निभाते हुए और अपना रोल है निभा रहे हैं। मजमूई स्कोर हो गया 131 और यहाँ से ऐसा लगता है कि एनजेएस कुजीन के लिए मुश्किलात अब तवील होती जा रही हैं, मुश्किलात में गिर गई है। और ये अच्छी गेंद थी, लगभग यॉर्कर गेंद जिसे दिफाई अंदाज से खेल गए और 7 ओवर भी मुकम्मल हुआ। अब जबकि 15 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है, मजमूई स्कोर है 131, 3 विकेटों के नुकसान पर एनजेएस कुजीन की 166 के जवाब में। So 131 for 3, 5 overs still left. Himalaya packages just 35 away from clinching another victory tonight. That's going to be their second in the third match. All of a sudden, the pitch has started to change its behavior. I mean, NJS Cuisine, the way they batted their first 10 overs, it seemed like the runs were not coming thick and fast and the ball was not coming onto the bat nicely. But then we started watching Noman Bari with a wonderful century that he got. But even if you break down that score of NJS Cuisine, he got 101 out of 165. And out of the 65, 23 came off the bat of Yahya Rizwan. So technically, no other batter could really contribute anything. Yeah, they didn't get many opportunity because they kept on losing wickets, a lot of wickets in the last 3 overs. But even then, the platform was set for the other batters to come and contribute more, but that didn't happen. And on contrary, if you look at the way Himalaya packages batters have batted, they have taken more responsibility and almost every batter has contributed. Saif Chaudhary getting a half century. Abdullah unfortunately got out on a low score. We saw Umar Loya contributing with the bat. Ibad now batting on 26, and even Tala Malik. I think Tala Malik has improved his batting significantly, especially if you look at the way he has batted in the first 3 matches of this tournament. Remember the last over against Mustafa Musa where he scored 2 sixes, because of which his side was able to go past 150. And they won that match in the end by 9 runs. So his innings was very significant. And even today, the way he has been middling the ball, the way he has played that sweep shot a couple of times to get those boundaries, I think he has got a lot of future ahead of him. Low full toss, hitting it wider towards long off. Noman Bari will have to run towards his left, but not before. Ibad will pick up another run, another couple in fact. Continuously scoring at more than 8 and over. In fact, more than 8.5 now, Himalaya packages. And this might be the first time in this tournament that the side chasing might go on to win this one. It's up in the air, chance for Bilal Ahmed. He dies, but he puts it down. And this is not the first catch we have seen being put down tonight. They have dropped half a dozen at least. Couple being put down by Anas, then Mubashir dropped one, Ehsan dropped one, and now it's Bilal
with a wonderful effort, but unfortunately couldn't take that one. 16 overs done. It's 138 for 3. Four overs left. Last over for Numan Bari. Running the first round. Now will he come back for the second? Thala wanted to, but not his partner Ibad. Well, do they need to take any of those risks right now? Because all they need are 26 more runs to win. They've got all the time in the world. Just over 6 and over is the required run rate. And they've got 7 wickets in hand. A lot of batting yet to come for Himalaya packages. Hits it just over Sheikh Ubaid. This time they will have the opportunity to come back for the second run. And I just get the feeling the throw should have been at the striker's end. Not having a good day today in the outfield, Anas Iqbal. He dropped a couple of them and now allowed the opposition to come back for a couple of runs. What a decent partnership this is turning out to be. NJS Cuisine might have thought that after getting rid of Umar Loya, they might crawl their way back into this game and get a couple of more wickets, but that didn't happen because Talha has batted responsibly. And the fact that he is not afraid of taking on Numan Bari, because he knows that Numan Bari has got those variations. Sometimes the ball is going to come slower through the air, sometimes it's going to be much quicker. So he's ready to wait for those deliveries, and the short selection has been brilliant. Ibad, on the other hand, has calculated this innings perfectly. He looks so comfortable when he's looking to play the spinners on the front foot, especially towards mid-wicket or towards extra cover. He takes just a little bit of step forward, plays it with a much straighter bat so that he keeps the ball down and hits that in that V region. And any batter who can hit in the V region between extra cover and mid-wicket, I think that's a sign of a quality batter. Took it as a full toss. Once again, without taking many risks, they have easily gathered 6 runs of the first 5 balls. Now, one thing is very important. Himalaya package are still in the driving seat, but just get the feeling they need to make sure that they don't take this game to the last over. Just try to make sure that you get it done within 19 overs. Obviously, it's going to be a boost in their net run rate. Nicely clipped. Once again, the shout is for 2, but the captain at square leg will do the job. Will pick up a single once again. Ibadur Rahman, 7 runs coming off it. It's 145 for 3.
3 more overs left, 21 more to get for Himalaya packages. Starts off with a shortish delivery. Does Khurram Dilawar. Picks up another easy single, does Ibadur Rahman. There hasn't been a lot of turn for the spinners on this pitch tonight, so it has behaved beautifully for the batters, and they will be hoping, in fact, the other teams will be hoping that the remaining matches to come will be played on the similar strip, in fact, the same strip, so that we can get some high-scoring games. Another quick single taken. He will look to have a shy at the stumps, but I think Tala Malik was well inside the crease by the time the ball reached the stumps. In fact, it didn't even hit it. NJS Cuisine will be mentioned that before as well. Because of the zero retention policy, you can see new squads every other season for the same teams. And NJS, although they've got some really quality players, but their side still consists of more all-rounders. Some are bowling all-rounders, some are batting all-rounders, and that's why we saw not much contribution with the bat from the remaining batters apart from Numan Bari. $19 more to get. Just get the feeling they need a boundary at least in this over. Goes for a big one. Saqib Ikhlas, the captain, puts another one down. It was not an easy one though. We'll come back for another couple. Yeah, Rizwan, I think Saqib must have done something wrong to him. I hope he's okay, the captain. Got into a very awkward position while looking to take that catch, but he's okay. Back on his feet. Another opportunity created by Khurram Dilawar, but not being able to gather that one, the skipper. Goes for the sweep shot. Well, he has played that shot beautifully tonight, Ibad. We'll just get a run this time because I think it was Bilal Ahmed standing at deep square leg and he anticipated the ball to come towards him. So he moved swiftly and ensured that he doesn't allow the team, in fact the opposition team, to come back for the second run. $150 up for Himalaya packages. 13 balls to go, 16 more to get, 7 wickets in hand. Should be a batting sides game this. Tala decides to come down the wicket. Doesn't time it well. Long off won't be able to cut that one. He overruns it. Looking to come back for the second run. The throw is just not as good as they wanted. And Tala Male picks up another couple. Now they have batted beautifully, but some credit should be given to the way the fielders have dropped those catches. 152 for 3 it is after 18. The heads are down already of NJS Cuisine. Hasan Tahir still having 2 more overs left. Will be bowling the 19th over. And Himalaya packages will be ensuring that this
turn out to be the decisive over of the game. I mean, they cannot afford to leave too many runs for the end of the innings. Ideally, if they don't chase the remaining runs down, which are 14 in this over, they'll be hoping that they can get at least 10 or 12. Needing anything under 5 or 6 will be easier for the batting side, but anything more than 7 or 8, I think the pressure is on the batting side. Just getting a bit of a breather, Ibadur Rahman. That allowed Ahsan Tahir to make some adjustments to the field on the offside. Big swing on the leg side, big gap between deep mid-wicket and square leg. They will look to come back for the second run. Anas Iqbal with a flat throw, but not good enough. And not backed up cleanly either by those fielders. That has been the story of the night for NJS Cuisine. Their fielding has been below par. Dropped catches, easy singles taken. The batting side converting those singles into twos and so many runs on the overthrows. $11 more to get. It's a runner ball now. Well-constructed partnership between these two. Got to give a lot of credit to Tala Malik and especially to Ibadur Rahman. Another low full toss, but we'll just get a run towards long gone. Ahsan Tahir is usually very accurate, especially with his Yorkers. It was very unfortunate for NJS Cuisine that Ahsan couldn't pick up wickets early on with the new ball. If he had done it, it would have been a completely different story altogether. And once again, the credit goes to the captain of Himalaya packages, Saif Chaudhary. The way he started off the innings, 55 of 25, just set the tone for the batting team. Thrash that one. That's beautifully timed and placed by Ibadur Rahman. That's going to run away for 4. He knew the importance of that stroke. He knew that they need a boundary at least in this over. And look at the way he just waited for the get over. Saad was standing at point. 6 more needed now. Full toss. Smashed. Chance for long gone. Another one being put down. Single taken by Ibadur Rahman. It's a full toss. He was looking to finish the things off with a big hit. Got it on the middle, but it's the longer side of the boundary, especially towards the wider long on region. And well, even before the fielder got near, you could have easily said that it might be another one being put down, because that has been the case. Just a couple of catches being taken, plenty have been dropped. So 5 needed now. Another low full toss. And look at the sound of the bat. Came right out the middle, but will still get a run towards long off. So just 4 more to get for Himalaya packages, and they'll become the first side in this tournament to chase down a target. And it took them 6 matches for this achievement. I mean, the previous 5 matches were all won by the side batting first. Ibadur Rahman, I'm pretty sure, will look to hit another boundary to finish the things off. He gets a slower delivery, doesn't get it off the middle. No one at fine leg. Yahya Rizwan giving the chase. They will look to come back for another couple. It's going to stay that way. So 164 for 3 it is, with 1 more over to go and just 2 more runs to get. Hear the crowd scream, chasing glory, chasing the dream. Every
So with just 4 more runs, in fact just 2 more runs to get, Saad gets to bowl the last over. Might be a wide outside here, so not given by the umpire. Just being a little more lenient towards the fielding side. Well, they had a rough day tonight. Another swing and a miss from Tala Malik. All right, they need 2 more. 2 more to get. Doesn't need to do anything fancy here, Tala Malik. There are plenty of caps available on the leg side. Well, Saad, it's the first time we are seeing him bowling. Course for the paddle sweep. That's going to be it. He's running the first one hard. We'll ask Ibar to come back for the second run as well. And that couple will seal the deal for Himalaya Packages. They become the first side in the tournament to chase down a target, and it was a big one. 165 comfortably chased down by Himalaya Packages, and NJS Cuisine suffering another defeat even after that brilliant century from Numan Bari in the first innings. GPL roars as the cricket play. Bats like thunder, hearts on fire. Dreams take flight, rising higher. TPL, hear the crowd scream. Glory.
From the pitch to the stands, feel the beat. Drums of the earth, stomping feet. Unity in the game we love. BPL shines like stars above. Hands in the air, let the spirit flow. BPL fever, let the passion grow. Fast as the cheetah, fierce as the fight. Under the moon, we play all night. BPL, hear the crowd scream. Chasing glory, chasing the dream. Every run, every wicket's goal. This is the anthem. Bold and bold.
यार आप ओके बोलो, फाद भाई स्टार्ट करते हैं. All right, it's time for the post-match presentation ceremony. This was match number 6 of Bluebird Presents Daily Premier League Season 2, presented by NJS Cuisine and powered by Net Solar Private Energy Private Limited. And we saw for the first time in this tournament a side chasing and winning the game in the end. It was absolute brilliant performance from Himalaya packages against NJS Cuisine. I would like to have a few words with Saqib Ikhlas first up. Saqib, बैटिंग पिच आज अच्छी थी, रन्स आपने भी बनाए, रन दूसरी टीम नहीं बनाए, बट कहाँ आपको ऐसा लगा कि टीम लैक कर गई? डेफिनेटली हमने मेरे ख्याल से 7 से 8 कैचेस छोड़े हैं आज इनिंग्स में. पहली ही ओवर से हमारा विकेट आई थी सेफ की, जो कि छुट गई थी. उसके बाद सेकंड ओवर में उसके रेगुलर इंटरवल्स पे बाद कैच छुटते रहे. तो मेरे ख्याल से ये हमारा बेसिक वो था, वरना जो है इसीलिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग पिच नहीं थी. आज आपने देखा, आपने डिसीजन चेंज किया, नुमान बारी को ओपन कराया एंड वो प्लान आपके लिए काम कर गया. नुमान ने आज रन्स किए और अच्छा होता है कि एक्सपीरियंस बैटर जब रन्स करे. बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह. हम तो मतलब काफ़ी टाइम से ये कोशिश थे कि हमारे जो कोर बैट्समैन है वो कोई कनेक्ट कर जाए. माशाल्लाह जिस तरह से नुमान ने बैटिंग करी, हैट्स ऑफ टू हिम. और माशाल्लाह से मेरे सीज़न की पहली सेंचुरी थी, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस. 3 बोर मैचेस अभी बाकी हैं, मजीद टाइम बाकी है गेम मैच टूर्नामेंट में वापस आने का. बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश हमारी पूरी होगी कि तीनों मैचेस में अच्छे से परफॉर्म करें और जो हमारी गलतियां हैं उसको हम सुधारें. जैसे पहले मैच में भी कहा था, लेकिन चलिए देखते हैं इंशाल्लाह. All the best, Saqib Ikhlas. Well played tonight. And now the winning captain, Saif Chaudhary. सैफ क्या था दिमाग में जब टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल सामने लग गया था और एक ऐसी इनिंग जिसमें दूसरी ऑपोजिशन की टीम का बंदा 100 कर देता, थोड़ा सा डिमोरलाइजिंग हो जाता है? नहीं बिल्कुल भाई, नुमान भाई ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेली. हमने पावर प्ले में स्कोर रोक लिया था, तो उम्मीद ये थी कि शायद आज भी वही है बॉलिंग विकेट है जैसी पूरे टूर्नामेंट में आ रही थी. बट देन अगेन जो हमने लास्ट 2 ओवर करा है, लास्ट 2 ओवर में हुमैद ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग करी. अब्दुल्ला आए हैं, छक्के जा रहे थे, तो मैंने कहा हम भी ट्राई करेंगे पावर प्ले में रन्स लें. पावर प्ले में चांसेस देने का ज़रा वो कम होता है कि चांसेस निकलें. यही प्लान था कि पावर प्ले में रन करेंगे, उसके बाद देखेंगे. अल्हम्दुलिल्लाह पावर प्ले में रन्स हो गए एंड देन टॉप ऑर्डर तो फिर परफॉर्म कर गया. इबादुर रहमान और तला मलिक और उमर लोया की भी अगर बात करें तो जो मोमेंटम आपने प्रोवाइड कर दिया तो उसको कैरी ऑन किया. बिल्कुल डेफिनेटली, और मैंने इनको ड्राफ्ट में पिक इसीलिए किया था, यही रोल था. अल्हम्दुलिल्लाह देखें आज हमारा टॉप ऑर्डर चला, हमने 165 चेस कर लिए. टूर्नामेंट का पहला मैच था, चेस कर लिए. बस जाहिर है खेल रहे थे, हमने कहा कोई बात नहीं. थोड़ा सा टॉस के टाइम पे ही डीमोरलाइज हो गए थे कि भाई टॉस हार गए, लेकिन भाई क्रिकेट है, क्रिकेट किसी की नहीं है, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा. All the best, Saif. It was a pleasure watching both of you play tonight. Now coming to the prize distribution ceremony, the first award is for the best, in fact the most economical bowler, and it goes to Faiz Chaudhary, making his first appearance tonight and picking up a wicket for just 19 runs in his 4 overs. He's going to get a gift from Miprose, a shield and a board. Another award is for the cool player of the match, a gift voucher of rupees 2,000 from Debonair Salon. It goes to the left-hander Ibadur Rahman for scoring 46 runs, valuable runs in this run chase. The next award is for the supportive role in the match and for brilliant bowling performance towards the end of the first inning, picking up 3 wickets and stopping the flow of runs. It was Abdullah Jamal. He's going to get a gift from Organic Herbs. Abdullah Jamal. Mozam Chaudhary will come and collect the award from his behalf. Mozam, आप हमारे साथ ही रहेंगे because you are the best fielder of the match because of 2 run-outs that you caused in the first innings. You are going to get a gift from Clopal and a hamper from CMDS Aluminium Foil. दूसरी इनिंग्स में कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, तो आपका ऑटोमेटिक सिलेक्शन था. Game-changing moment, a gift voucher from Organic Herbs, and because of the wonderful start that he provided to his team, it was Saif Chaudhary with a quick fire 55. The game-changing moment, the captain of Himalaya packages. Best bowler of the game, 3 wickets, just a run conceded, that too in the 19th over, along with a hat-trick. 2,000 rupees from DPL management and a gift from SM Jewelers, and it's the youngster Humaid Waqas.
Today was the first match where we saw a century being scored and a hat-trick being taken, and that was Humed Bakas who picked up that hat-trick. Next award is for the best batter of the game, 2,000 cash from DPL management and a gift from AVT Enterprises, and no surprises. Because of the brilliant century, it's Numan Bari being the best batter of the match. Now he is not just the best batter, but he's also the man of the match, Numan Bari. He got a wicket as well, took a catch, one of the few catches being taken, and 100 obviously. So 4,000 cash from DPL management and a gift from AY Fragrances for Numan Bari for being the man of the match with a big smile on his face. Thank you so much, gentlemen. All the best for the remaining matches. We'll come back tomorrow for another match of this DPL Season 2. Till then, it's me, Zishan Khalid, signing off. Allah Hafiz.